माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आइटम नंबर 1, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Item number 1. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer,
the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores
over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco initiative
to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like
NIIF, and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is tier 2, tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, RITES have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated RITES. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on tier 2, tier 3 cities and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7
high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology-driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals
have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income
including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in
Araku Valley in the Eastern Ghats, and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. And 3. Bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakigadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program. B. Scaling up and modernization of livestock enterprises. C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in Northeast,
and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies
expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt-to-GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt-to-GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27. compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt-to-GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores.
Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size.
This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years
to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms,
to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product
from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get
themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues.
but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3 Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003, medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Namaskar viewers, hello and welcome to this continuing coverage of the Union Budget 2026-27. I'm Tina Jha, with me is my colleague Manoj Verma. So you heard the Finance Minister Nirmala Sitharaman presenting the Union Budget 2026-27, also introducing the Finance Bill. She's made history today as she presented her 9th consecutive Union Budget under the leadership of Prime Minister Modi. This, viewers, is also the first time in India's fiscal history that the Union Budget has been presented on a Sunday. We'll discuss some of the proposals and the key highlights of this budget speech, which extended nearly 1.5 hours, some of the key announcements that the Finance Minister made. In fact, the proposals in the budget, she said, are aimed at boosting growth, meeting people's aspirations, most importantly, enabling inclusive development.
So the key highlight of the budget 2026-27 is that India has set a lower fiscal deficit target and higher capex outlay for FY27 with a reforms push. Just to put it into numbers, for the financial year 2027, the capital expenditure has been set at 12.2 lakh crore rupees. The fiscal deficit target has been set at 4.3% of GDP in FY27. In fact, if you heard the finance minister, she said she fulfilled her commitment that she made in FY 2022 to reduce the fiscal deficit below 4.5% of the GDP. Also, in revised estimates 2025-26, the fiscal deficit is at 4.4% of the GDP. The debt to GDP ratio is estimated at 55.6% in budget estimates 2026-27 versus the 56.1% in revised estimates 25-26. FY27 expenditure is estimated at 53.5 lakh crore rupees. The revised estimates of expenditure in FY 2026 were 49.6 lakh crore rupees. So a significant jump there as far as the numbers are concerned. Also, FY 27 net market borrowing from the dated securities is estimated at 11.7 lakh crore rupees. The gross market borrowing is seen at 17.2 lakh crore rupees. The net tax receipts estimated at 28.7 lakh crore rupees in FY27. We'll bring you charts and graphics related to it for you to understand better. These are just some of the numbers that we were able to pick up from the finance minister's speech. So in a few moments from now, our production team will be able to put out charts and graphics for you to understand better those numbers and a comparative data of how these numbers stand compared to the previous budgets. Also, the states, they will be getting 1.4 lakh crore rupees as the Finance Commission grants. These were about the important numbers, Manoj. Let's now quickly give our viewers a recap of some important announcements and statements that the Finance Minister spoke about, especially in terms of how this budget takes us closer and aligns it with our Viksit Bharat vision. जी बिल्कुल टीना जी, अगर आज के बजट की हम बात करें, जिस तरह निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया है और 3 कर्तव्य खास तौर से बताए हैं सरकार के, और ये 3 कर्तव्य जो हैं वो विकसित भारत का एक रोड मैप सरकार ने प्रस्तुत किया है देश के सामने कि कैसे सरकार जो है देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, उसको लेकर काम करेगी। साथ ही जो जन आकांक्षा हैं, मतलब जन आकांक्षाओं से मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आम आदमी से जुड़ी पहलू हैं, उन पर कैसे काम करेगी। इसी प्रकार सरकार ने 3 अपने कर्तव्यों के साथ देश को विकसित भारत के रोड मैप पर ले जाने का अपनी इच्छा प्रकट इस बजट के माध्यम से निर्मला सीतारमण जी ने की है। जाहिर तौर पे बजट में गांव, गरीब, किसान सरकार की प्राथमिकता में है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य को सरकार ने बूस्ट करने का काम किया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का खासा फोकस रहा है। बायो फार्मा सेक्टर के लिए सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोला है और सेमीकंडक्टर को लेकर भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण ऐलान इसमें किए हैं। हम जो पॉइंट्स हैं बजट के, उन पे चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ टीना, और दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि इस बजट का संदेश क्या है, मायने क्या हैं। Certainly, as Manoj rightly said, the contour, the overview of the budget is that the finance minister, under the leadership of the Prime Minister, has proposed interventions in 6 areas, and the budget revolves around these 6 areas, which includes scaling up manufacturing is in 7 strategic and frontier sectors. The FM spoke about rejuvenating legacy industrial sectors, creating champion MSMEs, again, key driver of our growth. So special attention has been given to that sector as well. Also delivering a powerful push for infrastructure. So in addition to expanding some of the already existing schemes, there are several key announcements, new announcements that the finance minister has also made in this regard. Ensuring long-term security and stability. And another key dimension that you will find in the budget is developing city economic regions. So we'll discuss with experts who are joining us in the studio. We'll also have industry leaders join us virtually to talk about what they think about the budget and, most importantly, how it aligns with our Viksit Bharat roadmap. Joining us are 2 guests in the studio. So let's begin the program by introducing them to you. Delighted to welcome Dr. Aman Agarwal, Director, Indian Institute of Finance, and Dr. Sabyasachi Saha, Associate Professor, RIS. Thank you, gentlemen, for joining us on the program. To begin with you, Professor Agarwal, how would you sum up the budget? Let's begin the program with that. No, I think the budget has laid down the path for a $5 trillion economy, and the Viksit Bharat program of the government of India in terms of
introducing not only growth but also the growth which can be felt by the common man. I think almost all segments of the society have been touched upon. The capex has been kept almost consistent to bring in growth and the stability in the economy, and the fiscal prudence which this government has introduced for almost over a decade now is reaping fruits, as the Honorable Finance Minister also pointed out that her commitment has met grounds of keeping it below 4.5% and targeting further down going forward. I think the GDP numbers in the last 2 quarters have shown clearly that the 7.4% projected in the economic survey might even get surpassed if we are able to get a similar kind of a jump as we've seen in Q2, Q3 this year. In fact, crossing 7.5 if possible, because all the factors which are there are so positive, giving a positive rebounding effect. And in fact, the budget has laid down a pathway which industry across the globe and within the country looks upon for introducing investments in the country in different segments. And in my opinion, none of the segments, whether it is social sector, rural development, or agriculture, healthcare, education, you talk of a sector, it has been looked upon. Even from a macroeconomic perspective, she has contributed and given not only roads and railways, but even city infrastructure, meeting the AI needs and structures which are there, the latest to be there. She's also talked about employment and how different sectors will induce employment through her schemes which she has proposed in the budget. I think the budget is a way forward beyond, as we say, India is more like an elephant. It is like an elephant which has been added the wings of a jet to go forward at a very fast speed. Like the BrahMos is making a mark globally for India, similarly this budget will make a mark for this country. Absolutely. Before we proceed, Manoj, 2 more guests have joined us virtually. Professor Ashok Vishandas, he's Professor Applied Economics, IIPA, and ex-chairman CACP, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and Mr. Riaz Tingna, he's a partner tax, Grant Thornton Bharat. Thank you, gentlemen, for joining us on the program as well. We'll get reactions from you in just a bit. Let me first get in Professor Saha. He's been waiting for long. Professor, your first reaction to the budget, because riding the expectations, there were huge expectations of this budget. So how do you look at it? Is it a growth budget, a reform budget, or a mix of both? Yeah, thank you for having me on the show. Once again, this has been a very remarkable budget in terms of the sectors that it has covered. It is an all-round budget. And it must be seen in continuity to the previous budgets, particularly the post-COVID budgets, when we were focusing not only on growth but also to ensure the supply chain resilience for the economy. And this year, in continuation to the push that was given to Atmanirbharta and Make in India, we see critical enablers being activated for the industrial sector, particularly the 7 sectors that the Finance Minister has particularly mentioned in her budget speech. We have also seen in the economic survey, which has categorically mentioned about the dynamism both in the industrial sector as well as the services sector in terms of its export potential as well as the importance for the economy. Overall, Finance Minister has touched upon key enablers for energizing both industrial and the services sector, because those are also the areas where the value addition would come from, along with employment. But at the same time, we must remember that in the last few years, there has been huge push to revitalize the rural development sector, the agriculture sector and others. And this year, we see no difference from that, and the continuity for a holistic rural development alongside very, very healthy economic growth of the urban centers, facilitating the roadmap for the MSMEs and other sectors would be key takeaways for me from this budget. जी बिल्कुल शाहजी, और अगर बात उसकी की जाए, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, जाहिर तौर पे सरकार का जो फोकस रहा है वो खेती किसानी पर रहा है, और एआई के जरिए
कैसे देश का उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे किसान को और खेती को टेक्नोलॉजी के जरिए मजबूत किया जाए, इस पर फोकस बजट में देखने को मिलता है। डॉक्टर अशोक विशन दास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे पर, क्योंकि खेती किसानी सरकार की प्राथमिकता में हमेशा से रही है। पिछले एक दशक में देखा है सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं देश में उत्पादन बढ़ाने को और किसान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए। इस बार के बजट में जिस तरह से एआई का उपयोग करते हुए देश में उपज को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ावा देना, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? अशोक जी, आप जी, अशोक जी अनम्यूट कीजिए। Sorry. Yeah, I hope I'm audible. जी जी। Yeah. So the two things. One thing I want to make it very clear, because the emphasis is on not just increasing the production but increasing the productivity. These are two different concepts. Earlier, the government used to say until 2014 to increase the production, and increase the production does not necessarily translate into the increasing the income. So that this government has recognized during last 11-12 years that increasing production is not the necessary condition, but increasing productivity does increase the income. So having said that, there is a lot of emphasis in this budget to increase the productivity and production emphasis on those items which are in great demand, because how the farmer get the higher prices is through the demand, not simply increasing the production. There are large number of cases in the history not long ago in 2012-13 when the production of, say for instance, the groundnut increased manifold, very significantly, but the farmer's income went down because the prices crashed. So government is conscious of this fact, and the emphasis is on high value production. Just to give few examples, sandalwood is in great demand, so the government has recognized the need for this. And then medicinal plant, even farmers are being roped in to increase the medicine. And how this will increase, there is a lot of emphasis and campaign for establishing of All India Institute of Ayurveda, which is one as of now in India, but there are 2 or 3 more has to be established in near future. For that, Ayurveda production will also spur, and that's very high value. And people are getting increasingly conscious of value of this without side effect, not only in India but outside India. So there is a great demand. Farmers will get benefited for medicinal plants. And then the marine products, lot of emphasis on this, because increase in production of fish, dairy, because those are the sectors which are high value. India is the leading, not only leading, but the top country which produces the milk. And likewise, in the production of fisheries, and then other crops, the medicinal value, the sandal, the coconut, the cocoa, and things like that, which command high prices. So value is emphasized on this, and therefore I'm sure, and then AI-driven technology in the agriculture will help a lot to the farmers to increase their income, because the income increase is most important, not the production. And increased income can be attained by increasing the productivity, not necessarily increasing the production. That is what the budget contains. That's right. In fact, just a quick recap of the kind of special attention that has been given to farmers. The finance minister said in her speech that the effort is to empower the vulnerable to access mental health and trauma care. So in addition to increasing farmers' incomes and expansion of the already underway schemes, there are initiatives underway to develop reservoirs, to strengthen fisheries value chain, especially in the coastal areas. She announced support to animal husbandry through a credit-linked subsidy program, encouraging creation of livestock farmer-producer organizations, support to high-value crops like coconut, sandalwood, and cashew in the coastal areas which have high potential, but initiatives which will perhaps now focus more on these areas to support the generation of walnuts in the hilly regions, to enhance competitiveness in coconut production, and to launch a dedicated program proposed to the Indian cashew and cocoa. So all these announcements perhaps aimed at harnessing the potential of these areas
and making sure that special attention is given to the farmers so that their incomes can also be increased, and that, you would recall, has been one of the focus areas of Prime Minister Modi's government since 2014. Mr. Riaz Thegna is also joining us. He is a partner tax Grant Thornton Bharat. Mr. Thegna, thank you for joining us on the program. The first reaction on the budget, what is it that stood out for you from the Union Budget 2026-27, which again aimed at continuity and growth-oriented measures? No, absolutely. I think one of the most striking features of the budget is the consistency with which the policies are followed. The emphasis towards reforms, simplification continues. Fiscal prudence is always being followed religiously, and that is really showing results. But in addition to all this, what we are seeing now is an emphasis on, enriching or developing human capital. So through the AI awareness, we are deepening in the financial sector, expansion of the concept of infrastructure from physical to an overall institutionalized skill development infrastructure. These are the areas which are going to help all the different categories of people, more inclusivity, and I think then the real issue of inequalities of income can also be addressed much better. So I think that kind of an all-rounded feature of this budget stands out, and the commitment towards decriminalization, making simplification of laws, again remains untouched. So it's, I think, a very, very focused and consistent budget. So at a time when, the global economy is uncertain, do you think the budget has done enough to not just accelerate India's growth momentum, but also help us build greater resilience in order to keep us insulated from the volatilities about which the economic survey also warned about? No, absolutely, because firstly, you're talking about an emphasis on manufacturing, support to manufacture. There is an additional emphasis, focus on technical inputs, AI, etc. In fact, cloud-based services which are using Indian data centers have been exempted from tax. Those kind of approaches have ensured that there will be more amount of income flowing in. There is some relief on the investment front, allowing or encouraging more foreign investment to come in. With all this, the strengthening of the economy, both in terms of competitiveness, greater resilience, and of course increasing the consumption within the country, all these are going to stand us in good stead against the global headwinds that one is facing. That's right, and I particularly liked how Professor Agarwal, the finance minister, brought in the common man. She expressed gratitude to the Indians for, being part of this journey. We've had setbacks, back-to-back setbacks, I should put it like that, after the COVID pandemic in terms of global supply chain disruptions. Then there have been regional conflicts that have broken out, and then to add to that have been the tariffs. But the growth, India's growth story has stood out. But she's tried to connect it to the common man. She put it out quite beautifully that this is the first budget that was prepared in Kartavya Bhavan, and she's weaved the entire budget around the three Kartavyas. So I think in terms of listing out the three Kartavyas, the first one is accelerating, sustaining economic growth by enhancing competitiveness, building resilience to the volatile global dynamics. How do you think this budget takes it one step further to build greater resilience, to perhaps keep us insulated? Again, the same question that I asked Mr. Thegna, because these headwinds are going to perhaps expand in nature in the coming times, and keeping the volatility of these threats in mind, we need to ensure that we are on the right path and that resilience reflects in India's growth story. No, I think the growth trajectory which India has witnessed, clearly visible in the economic survey, the international agencies, whether it is IMF, World Bank, OECD or any other agency,
ADB, has been talking about the growth story, appreciating the growth story, the reform process which the government adopted. Not only the fact that they only come at the budget timing like she has presented now or previously, but even during the year when the GST reform was introduced and Diwali bumper was given to the people at large by reducing GST to 2 frameworks, is a clear-cut instance and stand where they're saying it has a human face. Now, we have had budgets in the past where Kisan was the face, where the industry has been the face, the SME has been the face, the youth has been the face. This time there is a human face meaning that is the all categories, people at the lowest level, the middle level, everybody, even the people in the industry, they have been looked upon. You see, waiver of customs on critical disease, drug disease and all. Similarly, in the GST reform when they were introduced in September, they was completely done away with about large number of drugs. GST was done away from them. Large number, about 98% of items were removed from the GST framework, from consumer goods. So the fact that the government is looking at the Aam Aadmi, the Janta, the people of this country, to make it proud of what we are, I think to introduce that growth. And given the fact that we have recently signed the EU trade agreement and other FTAs which have been signed in the last year or two, and further some of them are coming in place as well in the future soon, they require a requisite kind of an infrastructure, a motivated human capital which is there to take that charge. Even if you see the first time a FTA agreement talks about labor mobility, research, even in this particular budget she mentioned at multiple stages to actually introduce research and development. So investments were linked with research and development, whether it was tourism, whether it was hospitality, whether it was education. So it was not only that I'm giving money for this purpose, but it was that you need to have research. Who will do research and development? It is not going to be machines or AI. It is going to be people who are going to function, scholars, researchers. A common man, a Kisan, will be involved in getting some of these up, and that's where the human face is visible. And this overshadows, and last 2 years we have seen turbulences, whether it is Trump, whether it is India-Pakistan war, whether it is other wars which are happening, supply chain disruptions which have happened, a lot of things have happened. We have brought our old gold back into this country. Now these are some steps which have clearly shown the resilience of this country against any kind of international turbulence which may happen. Even within the country, a turbulence like India-Pakistan was a scary fact. We had recently, after a long number of years, a small kind of a bomb blast which happened, not out of the blue, but not on as an attempt which could be controlled. Now these clearly have shown that there no economic disruptions will happen. People will keep growing, India will keep growing and keep contributing to the growth. बिल्कुल अमन जी, और इसीलिए सरकार ने बजट के माध्यम से जो अपने 3 कर्तव्य गिनाए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में, जाहिर तौर पर वो विकसित भारत का पूरा रोड मैप है जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रोड मैप के रूप में कार्य करेगा। उसमें जो महत्वपूर्ण पहलू हैं 3, वो आर्थिक विकास को गति देना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास, जो पहले दिन से सरकार का एक मूल मंत्र रहा है। किस तरह से आम आदमी को देश का समग्र विकास किया जाएगा। साहजी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक तरह से विकसित भारत का लक्ष्य है और सरकार ने अपनी नीतियों को स्पष्ट किया है इन 3 कर्तव्यों के जरिए कि क्या 3 कर्तव्य हैं सरकार के जो आगे समय है विकसित भारत का, उसको लेकर सरकार काम करेगी। नीतिगत रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा सरकार ने दिया है, गांव गरीब किसान के लिए सरकार ने पैसा दिया है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन ये जो 3 कर्तव्य हैं ये क्या संदेश देते हैं? ये जो सरकार का, आपने सही कहा, शुरू से सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य लेके ये सरकार आगे बढ़ी है और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है, जिसको हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। जो सोशल सिक्योरिटी का इकोसिस्टम है पिछले 10-12 साल में, जो ये मैं जैसे बोला, ये इट शुड बी सीन इन कंटिन्यूटी। एक के बाद एक नए पॉलिसीज लाए गए, हर तबके की जैसे फ़ायदा हो, गांव, किसान, महिलाएं, युवा, आप किसी को भी ले लीजिए, उनका जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात है, उसके लिए जो एलोकेशन है, इंक्लूडिंग लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, विच बिकेम थोड़ा वो मुद्दा सामने आया कोविड पैंडेमिक के बाद। तो ये सारे को लेके जो हम
पॉलिसी इकोसिस्टम बना है उसी का ही कंटिन्यूटी में इसमें देख रहा हूँ, और ये बजट उसी नैरेटिव को और भी स्ट्रेंथन करता हुआ आगे बढ़े हैं। एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, हमारा मिडिल क्लास है, उनके लिए क्या सुविधा है, उनका रोजगार का है, उनका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का है, उनका सर्विस सेक्टर के साथ जुड़ने का जो सवाल है, अभी क्रिएटिव इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, कई तरह की बात इस बजट में किया गया है। वो एस्पिरेशन ऑफ द पीपल के साथ गिना जा सकता है। और जो विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है, हम साल दर साल अगर यही इकोनॉमिक ग्रोथ को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं तो वो लक्ष्य भी हमारे लिए आसान होगा। While details of the announcements are expected to come in and probably then we can discuss it further in the coming days, but one statement that the finance minister asserted at the beginning was that budget 2026 is Yuva Shakti driven, and she's laid specific focus. I recall in the previous budget she had said there are 4 pillars to the budget which included Yuva, farmers, women. Today she specifically used the word Yuva Shakti. Listening to the finance minister's speech, what is it that you think particularly caters to our large youth population? Today we are the youngest population. We have the world's largest youth in the world. So to cater to their aspirations, to cater to their employment needs, what is it that you think stands out in the budget? Actually, this budget generates a lot of hope, both in terms of the skilling requirements. As finance minister rightly pointed out, skilling requirements are at various levels. At the primary level, then you have the high-tech side of it, but also when you are developing the labor-intensive sectors, you are supporting the labor-intensive sectors, you are supporting exports from the labor-intensive sectors, even in a situation of global uncertainty. And then you have the industrial sector growth being prioritized at different levels, including strengthening the service sector. So it requires skill development at multiple levels, and finance minister has talked about it, including setting up university townships, setting up skill centers, strengthening mental health support system, strengthening the safety and security of women and girls so that they can participate in the labor force. So definitely this is something that is going to take care of the unmet needs still that are there in the youth population. That's right. Let me bring in Mr. Riaz Thingna once again into the discussion, understand his perspective on what stands out in terms of the taxation announcements that the finance minister made. The last budget gave the common man a lot of reason to cheer because there was exemption up to 12 lakh per annum. But this time, of course, the announcement to that regard has not been mentioned by the finance minister specifically. We'll look at the part B of the finance minister's speech in greater detail as we get the document. But Mr. Thingna, what is it that stood out in terms of the taxation, something that we are not understanding at the moment, but which holds immense significance in terms of putting us on a higher growth trajectory, but also in terms of keeping the people happy and taking care of their needs? See, last year's budget had already made a lot of changes in terms of tax rates, given a lot of reliefs on taxation, and I don't think we expected any further changes in tax rates. What was required was the continued push towards rationalization, simplification, and creating a level of certainty. I think as far as rationalization and simplification goes, the announcement that the new Income Tax Act will be implemented with effect from 1st April 26, though there had been recent rumors that there might have been an extension, that helps a lot because the new Income Tax Act is a big measure towards simplification of laws. I think that has been done. The second part, and that is very, very important, the continued thrust towards decriminalization and the ad hoc levies of penalties. I think there's been a lot of clarity being provided. A lot of areas, there'll be a clarity that there will be no prosecution, no criminal action in terms of wherever there are cases of defaults which are more fiscal in nature rather than intent malified criminal acts. So I think that is the second part which is helping. The third is that
some of the provisions are really helping the common man, the lowest level. There's a continuous problem for withholding tax. I think the clarity of automated withholding tax certificates at the lower level goes a long way. I think that has been very important. And by and large, the continuation of this reform engine towards rationalization, simplification, decriminalization continues unabated, and that gives a lot of hope and faith to the investor in the market. जी टीना, अगर बात आम आदमी की हम करें, आम लोगों की बात करें, तो स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता में रहा है और इस बार के बजट में भी देखने को मिल रहा है कि कैंसर और डायबिटीज की दवाओं के मामले में कि दवा सस्ती लोगों को मिले, इसको लेकर भी सरकार ने एक बड़ा प्लान बजट में रखा है। कैंसर और डायबिटीज की दवाओं के मामले में भारत आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर 10,000 करोड़ रुपए का प्लान सरकार ने रखा है। आत्मनिर्भर दवाइयों के मामले में भारत बने, बीमारियों से लड़ना भी है भारत को, और भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने का भी लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे देश में। जाहिर तौर पे जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, सरकार उसको भी बजट के माध्यम से बढ़ावा देना चाहती है। अमन जी, अगर बात स्वास्थ्य सेक्टर की मैं करूं, हेल्थ सेक्टर की जाए, तो उसको आप कैसे देखते हैं इस बजट के माध्यम से, क्योंकि कैंसर और डायबिटीज एक बड़ी चुनौती है देश के सामने? देखिए, मेरे विचार में कोविड के बाद से सरकार ने दुनिया को दिखाया है कि इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, जनता है, उसको किस तरीके से बिना डिस्टर्बेंस किए, बिना chaos क्रिएट किए, किस तरीके से स्मूथली कोविड का नियंत्रण किया, लगाया, सब जगह लोगों को लगाया, पहुंचाया उन तक। और उसके बाद से हिंदुस्तान को WHO भी और एजेंसीज भी अप्रिशिएट कर रही हैं। पर इस बार बजट में उन्होंने सिर्फ ड्रग्स, जो जबकि GST में भी उन्होंने रिलीफ दिया था, इंश्योरेंस में भी जब हम लेना चाहते हैं उस पर प्रीमियम खत्म कर दिया इस बार GST में। इस बार और एक तो 17 ड्रग्स स्पेसिफिकली जो कैंसर की इंपोर्ट की जाती थी ओवरसीज से, उसके अलावा कुछ और कैंसर की जो मेडिकेशन इंपोर्ट की जाती हैं, इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो है कस्टम ड्यूटीज हटाई हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है योगा को भी देखते हुए, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री का योगदान दिया कि उन्होंने UN तक लेके गए, उससे विश्व में इसकी फैलाव और हुई है आयुर्वेद और योगा की, उसको छोड़ते हुए उन्होंने कहा 3 नई इंस्टीट्यूशंस, 2 जो हैं टेस्टिंग एजेंसीज क्रिएट की जाएंगी, स्ट्रॉन्ग केयर सिस्टम जिसमें 1.5 लाख लोगों को हेल्थ केयर के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, सेटअप किया जाएगा, AI बेस्ड ट्रेनिंग की बात करी, मेडिकल टूरिज्म की बात करी, बिकॉज पिछले 10-12 सालों में हमने देखा काफ़ी लोग विश्व से, अलग अलग देशों से, अमीर देशों से हिंदुस्तान में आते हैं, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ केयर अफोर्डेबल भी है, साथ में अच्छी भी हेल्थ केयर मिल पाती है, अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी भी, प्राइवेट भी, तो उन हेल्थ केयर से तो उनको बढ़ावा देने के लिए 5 रीजन्स को मेडिकल हब बनाने की बात करी। जहाँ यूनिवर्सिटीज़ की बात करी, एजुकेशन की बात करी, उन्होंने उसमें भी कहा कि वहाँ पे भी हम हेल्थ केयर सेटअप्स क्रिएट करेंगे। मतलब हर एक चीज़ को ना जैसे बुन के बनाते हैं चीज़ों के अंदर, जैसे कोई चीज़ बना के एक चीज़ बनाई जाती है, इस तरीके से एक आम आदमी की हेल्थ केयर, आयुष्मान की बात करी, उसके अंदर उन्होंने प्रोग्राम के अंदर कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, वहाँ पे टैक्स हॉलीडेज की बात की, रिलीफ्स देने की बात करी। इस तरीके से जो सारे सिस्टम्स को देखते हुए एक हेल्थ को बढ़ावा, और जो कोविड के बाद जैसे मैंने कहा काफ़ी सरकार का मुहिम रहा है, तो हेल्थ केयर और एजुकेशन की प्रति इन्होंने बहुत अभी काम किया, और अब और काम देखने को, रोड मैप देखने को मिला है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, इवन जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से लोग लेके आ रहे हैं हेल्थ केयर के अंदर, उसके बिकॉज आज देखें तो हेल्थ केयर, जैसे उन्होंने डेटा सेंटर्स की बात करी, जहां AI की बात करी कि उनको रिलीफ दिया जाएगा टैक्स के अंदर। अब डेटा सेंटर सिर्फ ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या ये अकाउंटिंग का डेटा रखने के लिए नहीं होते हैं, हेल्थ केयर डेटा भी अब आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपके मेडिकल हिस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं। अमेरिका से पहले हिंदुस्तान में करते थे, अब हिंदुस्तान की भी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, उनको भी देखना कि कहां पे क्या हो रही है, कोई महामारी हो रही है, कोई चीज आती है एकदम से, जैसे अभी भी कोई एक वायरस आया था, उसको कंट्रोल कर लिया भारत सरकार ने 1 दिन 2 दिन के अंदर। तो ये चीजें देखना हेल्थ केयर सिस्टम की मजबूती दिखाता है, और सरकार का कंटिन्यूड ऑब्जेक्टिव जो है कि किस तरीके से हम हिंदुस्तान को स्वस्थ भारत बनाएं, सिर्फ एक अमीर या मिडिल क्लास नहीं, एक गरीब तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता एक्सपेंसिव मेडिकेयर, उसको भी मिल सके। जी टीना, इस बार के बजट में बायो फार्मा सरकार की प्राथमिकता में ऊपर रहा है, केंद्र में रहा है। साहजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे पे, क्योंकि सरकार भारत को बायो फार्मा के क्षेत्र में दुनिया का बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे वजह क्या देखते हैं, क्या संभावना है और क्यों आवश्यकता है?
देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत दुनिया में भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि जेनेरिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया भर में आगे हैं, हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत हाई है। और उसके साथ साथ जैसे कोविड के टाइम हमने देखा कि जो भारत का वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी दुनिया भर में उसका सराहना हुई। डेवलपिंग कंट्रीज़ के तहत हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और रिसर्च का कैपेसिटी है वो कई देशों से आगे है। दुनिया भर में वैक्सीन की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उसमें भी हम आगे रहते हैं, जो सप्लाई होते लो कॉस्ट वैक्सीन सप्लाई में हम आगे रहते हैं। और ये जो ट्रेडिशनली इंडिया का ये स्ट्रेंथ रहा है इस एरिया में, बायोफार्मा एंड फार्मास्यूटिकल्स, इस बार जो एडिशनल प्रोविजन हमने बजट में देखा इसका क्लियर एक रोड मैप है। ये जो बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स, और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम देख रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का भी जो अभी जो इंडिया बहुत ज़्यादा उससे जूझ रहे हैं, तो उसको रिस्पांस के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इसमें सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जो इंपोर्ट डिपेंडेंस था एपीआईज के ऊपर उसको रिड्यूस करने का काम हुआ है। एडिशनली रिसर्च इकोसिस्टम को भी सरकार ने इस बजट में बड़ा सपोर्ट किया है। जैसे नाइपर्स हैं हमारे, तो नाइपर्स अभी 3 और खोले जाएंगे, तो पूरे देश में 10 नाइपर्स आ जाएंगे। तो साइंटिस्ट के लिए इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे और एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, बायरैक है, पहले से बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इस एरिया में। तो हम मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी था, बहुत आगे के लिए ये हमारी जो मेडिकल सेक्टर को स्ट्रेंथन करेगा और सिटीजन को सपोर्ट मिलेगा। जी, Since you spoke about support, Professor Vishandas, we've already spoken about targeted efforts for increasing farmers' income. But there is one thing that sounds quite interesting, which is Bharat Vistar, that the finance minister announced. And Vistar here stands for Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources. Now, of course, the proposal to launch this means that it envisages a multilingual AI tool. So once again, integrating technology, making it beneficial to all, which includes women in STEM, which includes farmers in the fields. You would recall the finance minister started by saying that we believe in adoption of AI and percolating benefits to all. And farmers in the fields is the first thing that she mentioned. So tell us about how this scheme is going to enhance farm productivity and it's going to enable better decisions for the farmers. Professor, please unmute yourself. Yeah, sorry. In the AI, the underlying philosophy of this is, because if we apply AI, it will replace the human being, because the productivity in the agriculture is about 29% of non-agriculture. So there is something missing here, and the cost of capital is going to be small compared to the cost of human labor, and therefore it is on economic principle, it is prudent to go for AI and the farm mechanization and things like that. So it is a step in the right direction to go on whole hog AI and other things and technology in the agriculture. 46.5% of the entire country's workforce is in agriculture, and then the agriculture GDP is about 15%. So it's not sustainable if we continue for the business as usual. So government has thought out of box to go AI in agriculture in particularly, and then extend it. And for instance, in this country, 86% are small and marginal farmer. Land is fragmented, and it's very difficult to have the big tractor and everything in the agriculture, which is unsustainable. Large number of studies have shown. So AI is the answer. That is number one. Second point is the government has rightly recognized that in the coconut, just an example, there are 10 million coconuts. The government has announced that old trees which has to be replaced by the new sapling, and that if it is to be done on a scale,
then AI is a answer because it increases the productivity. Our exports competitiveness comes from the low cost, and low cost can be further reduced by application of the AI, which is an answer. And then we have to take the youth of this country to a better skills and all those things, so that agriculture is sustainable. And everything, say COVID is an example, when our economy, the negative growth in all sector except agriculture. So our agriculture of India is resilient and it has a future, and nothing, because it's a strategic also. If we are not food secure country, we could not have become the nuclear country. That's my belief. And then it is just an example. So we cannot depend on very strategic things like agriculture on other country. Therefore, there is a need to be independent, self-reliant in agriculture particularly, and any matter which is strategic in nature. If we depend on other country for strategic key supply, then it is a coercive. We have seen last few months or 1 year how the other country can be very, very strategic, and coercively they will extend a pound of flesh if we are too much dependent on country. That's right. So consistent trust that we are seeing from the finance minister in her consecutive budgets on strengthening various sectors. Another important announcement has been made by her on comprehensively reviewing the financial sector, aligning it with India's next phase of growth. Professor Agarwal, a high-level committee on banking for Viksit Bharat to align the financial sector with India's next phase of growth. How significant and how reformative is this move, in line with the reformative measures that we've already seen, which have been quite beneficial for the health of this sector? Now, I'm very happy you raised this point because it's very critical, although it looks very small and she has only referred to it as a committee framework. But you see, banking is something which makes movement of money, whether you talk of healthcare or education or industry or any activity, even this activity of news broadcasting, everything involves money. And if there is not an efficient way of transfer of this money which takes place in an efficient manner to the lowest possible cost, it is not good. I think you will be knowing that we introduced the digital rupee as a pilot study about 4 years back, and we are the first country in the world to introduce a digital currency, a central bank digital currency to be introduced on the platform. Now, putting that in place, that we are wanting to move out of cash-based economic system into a digital base, while we have already moved into a UPI framework and others, and the RuPay is taking over the world against the MasterCard and Visa. It is important that an appropriate banking structure and strategy is in place to take the new challenges, the new world challenges, including AI and cyber security framework, to be taken into account, so that the robust framework which we are talking about, the kind of agreements we are talking about, international movement of funds, labor mobility, people wanting to transfer funds from across the globe, does not take place through informal channel like the Hawala, but through formal channels which the government develops. If there are appropriate means and mechanisms to do it, people will prefer to do it through the official channels than the unofficial channels which have been used in the past. Not forgetting that despite the Jan Dhan account creation, the demonetization, we still have a parallel economy which is as strong as a normal economy. And this step will help reduce that further if they are able to reduce the banking cost and smoothen the efforts which are there. So in my opinion, this is what greases the whole system. And the budget, when we talk about, is nothing else but all about money. Whether it is to one sector or the other. And so that money movement is critical. The government has done direct benefit transfers to people, whether it is farmers, to women and others. But I think still a streamlined processing which is accountable, transparent and fungible is what this committee will look into, so that we can move into that Viksit Bharat framework, that $5 trillion economy mark by this 2027 itself. जी बिल्कुल, अगर टीना बात की जाए इस बजट की, तो इस बजट में ऊर्जा क्षेत्र को भी सरकार ने प्राथमिकता में रखा है। निर्मला सीतारमण जी ने ऊर्जा को लेकर जो घोषणाएं इस सेक्टर में की हैं, जाहिर तौर पे आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इसको लेकर भी कई घोषणाएं की हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता
इस मुद्दे के साथ सरकार ने सोलर एनर्जी और परमाणु ऊर्जा को केंद्र में रखते हुए कैसे दूसरे जो ऊर्जा के साधन हैं, कैसे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से। शाहजी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं इस सेक्टर को, क्योंकि एक मेजर सेक्टर है इस बार के बजट में, ये आप कैसे देखते हैं इसको? ये जो ऊर्जा का सेक्टर है, आप देखेंगे कि भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन है ये एक मैसिव स्केल पे हो रहा है, चाहे वो सोलर है, विंड एनर्जी है और न्यूक्लियर एनर्जी आपने जैसे बताया। और अपने टैक्स प्रपोजल के टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ने दोबारा दोहराया कि जो BCD है, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है, इक्विपमेंट्स पे, पार्ट्स पे, तो उस पे जो लगातार जो हमारा एग्जाम ड्यूटी एग्जाम्पशन है उसको उन्होंने बरकरार रखा, कई मायनों में उसमें कई इम्प्रूवमेंट्स भी लाए। तो ये ऊर्जा सेक्टर की जो कम्पिटिटिवनेस है, डोमेस्टिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, सबको बढ़ावा देगा। इसके साथ साथ एक अहम घोषणा फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में की है, वो है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजीज का। आपको पता होगा कि ये एक फ्रंटियर डोमेन है जिसमें दुनिया भर में एक साथ काम चल रहा है। तो ऐसा एक डोमेन जिसमें हम पीछे हैं, बोल नहीं सकते, तो हमें पैरेलल एफर्ट की जरूरत है। इंडिया अगर इसको टैप कर पाए सही मायने पे तो इंडिया आगे रहेगा। ये हमारे जो हम जस्ट ट्रांजिशन बोलते हैं, कार्बन एमिशन रिड्यूस करने की बात करते हैं, हार्ड टू एबेट सेक्टर्स में जो एनर्जी यूज होता है उसको एमिशन रैशनलाइजेशन की जो बात करते हैं उसमें कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की अहम भूमिका है। और उसके लिए 20,000 करोड़ की जो आंकड़ा सामने आई है, ये एक बहुत ही बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है, मैं मानूंगा। जी बिल्कुल। अमन जी, अगर बात बैटरी ऊर्जा भंडारण की जाए, क्योंकि जो बैटरी ऊर्जा भंडारण का जिस तरह से एक परिवर्तन के दौर से मैं कहूंगा ऊर्जा के क्षेत्र में भारत गुजर रहा है और नए नए प्रयोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात की जाए या दूसरे सेक्टर्स की बात की जाए ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? नहीं, मेरे विचार में भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी पिछले 4-5 साल से नज़र आ रही है, बजट के अंदर भी और बजट के बावजूद भी, जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को महत्व दी जा रही है, बैटरी फ्रेमवर्क को, EV व्हीकल्स को महत्वता दी जा रही है, टैक्स रिलीफ्स भी दिए जा रहे हैं। और अब जैसे ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर बाहर की जो गाड़ियां हैं उनको भी अलाउ किया गया है। EV के अंदर 1 लाख तक जो गाड़ियां हैं वो यूरोपियन देशों से हिंदुस्तान में आ सकेंगे, उनके ऊपर उन्होंने टैक्सेस ख़त्म से कर दिए हैं बिल्कुल। कहाँ जहाँ 120-200% होता था वहाँ पे 30-40% के ऊपर उसको लेके आ रहे हैं। तो मेरे विचार में भारत सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से ऊर्जा युक्त कर सकें। बिकॉज अगर आजकल हर एक चीज़ ऊर्जा, हमें काम करना है, लैपटॉप चाहिए, हमें कोई जहाँ ट्रांसपोर्टेशन लेना है, जिस तरीके से विस्तार हुआ है EV व्हीकल्स का हिंदुस्तान के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर, इतना किसी भी देश के अंदर विश्व में नहीं देखने को मिला है। और ये जो एक लोकप्रियता एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की प्रति आ रही है, उसमें बैटरीज की रिक्वायरमेंट, और सिर्फ लिथियम बैटरीज नहीं और भी, जबकि हमारे पास लिथियम का रिसोर्स अभी 1.5 साल पहले मिला है, उसको एनर्जी राइज करने में करीबन 1-1.5 साल और लगेगा। बट लिथियम के अलावा भी और जो सोर्सेज कुछ निकल के आ रहे हैं, नए सोर्सेज निकल के आ रहे हैं जो रिन्यूएबल टाइप हैं, जहां बैटरीज यूज हो सकती हैं, उस तरीके की बैटरीज क्रिएट करके इको सिस्टम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। You're right. In fact, to capitalize that momentum, since you spoke about the semiconductors, let me put across the numbers in terms of the allocations. 40,000 crore rupees has been given to the semiconductor mission. India's semiconductor mission 2.0 will focus on the industry-led research, training centers for the semiconductors, and there will be specific measures to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. So we'll get into specifications of these allocations with sector-specific guests who will also be joining us through the day-to-day. But since we have guests with whom we are discussing some of the important announcements that the finance minister has made, and we are trying to cover different sectors, I'll try and pick out one more announcement that the finance minister made about the implementation of the new income tax and the simplified forms, which will come into effect from the 1st of April 2026. Mr. Riaz Thigna, let me bring you in. How transformative is the new income tax compared to the previous overhauls, if you see in this sector? How transformational is this going to be? How should the individual taxpayers, the small businesses begin to prepare once it comes into effect? Okay, the new Income Tax Act is not
new in terms of change in law itself. Basically, the thrust of the new Income Tax Act is simplification, making the language a lot simpler and therefore easier to understand. So that is the main thrust of the new Income Tax Act. And along with that, the entire process of simplification continues, and therefore we have simplified forms, we have easier compliance methodologies. So these are the things that are really changing. But what is the impact of all this? On one hand, I mean, I like to correlate it by what you were talking about, the concept of the focus being on youth. Now, with youth, an important component is employment. You create a lot of employment by investment in various sectors, whether it is biopharma, whether it is electronic components, whether it is rare earth, all that you do. But on the other hand, you are doing a lot for the MSMEs, which create a lot of employment too. And when you do this for MSMEs, you have to make it easier for the MSMEs to comply with all the regulations and all the requirements. What does the budget do? A, simplifies the forms. B, it also encourages institutions like the Institute of Chartered Accountants and the Institute of Company Secretaries to create a Mitra scheme to help the MSMEs and the small taxpayers to directly comply with the provisions of law. And I think this entire thing together kind of fits into a great network which actually supports each other. You have the economic aims, and then the tax laws are going and supporting the implementation or achievement of those aims. जी बात अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की जाए तो जाहिर तौर पे सरकार ने जल मार्ग को भी फोकस में रखा है इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने, और रेल उसको भी फोकस में रखा है। रेल कॉरिडोर बनाने की बात भी है और साथ ही जल मार्ग की हिस्सेदारी जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि लक्ष्य 2047 है विकसित भारत, 6% से लेकर कैसे 12% उसको किया जाए, इसका एक रोड मैप भी प्रस्तुत किया गया है इस बजट में। ये जो दो सेक्टर हैं, खासतौर से जल मार्ग की बात की जाए अमन जी, या रेल कॉरिडोर की, इन दोनों सेक्टर्स को आप कैसे देखते हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिहाज से, कितने महत्वपूर्ण है ये दोनों सेक्टर? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 20 नए वाटरवे क्रिएट करने की बात की गई है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की बात की गई है, 5,000 करोड़ पर स्टेट पर डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ 5 साल के ऊपर हर एक स्टेट को दिया जा रहा है ताकि सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। ये सब बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हम ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, बाहर की कॉरपोरेशंस को इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे आके बिजनेस करने के लिए, हिंदुस्तान मेक इन इंडिया को बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए भारत, ये सब जो बहुत ज़रूरी है। ई बस फ्रेमवर्क 4,000 के करीब ई बसेस नॉर्थ ईस्ट को दी जा रही हैं। इको टूरिज़्म की वहाँ पे बात की जा रही है। अगर टूरिज़्म कैसे होगा, एक आदमी को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगेंगे, तो नॉर्मली जो टूरिस्ट आते हैं वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए आते हैं, तो वो कैसे उस टूरिज़्म को बेनिफिट कर पाएंगे? चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे मेडिकल के बेसिस के हो, चाहे एजुकेशन के बेसिस पे हम टूरिज़्म की बात कर रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है और वाटरवेज जो है, इस सरकार ने पहले कभी हमने इतना तवज्जो नहीं दिया। बहुत सालों पहले वाटरवेज को यूज़ किया जाता था, जब इंसानियत भी शुरू हुई तब भी वाटरवेज को यूज़ किया जाता था, बट अब वाटरवेज पिछले काफ़ी सालों में शांत। इस सरकार ने पिछले 4-5 सालों में वाटरवेज को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से कार्गो के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको किया, और क्लीन मैकेनिज्म के थ्रू यूज़ करने की बात की है। ये नहीं कि हम उसको पोल्यूट करके या पोल्यूशन बढ़ा के उसमें किया जाए। तो मेरे विचार में ये एक बैकबोन है किसी भी देश की आगे प्रगति बढ़ाने के लिए तेज। Certainly. So, important announcements, particularly focusing on how to boost productivity, but most importantly, sustaining that growth momentum and focusing more on inclusive growth. So, 3 kartavyas outlined by the Finance Minister in her 9th consecutive budget. She's created history today. And most importantly, the fact that it's a Sunday on which the budget has been presented. So, a rare history of sorts in India's fiscal landmark as well. But for now, we'll have to wrap up this conversation. We'll slip into
into a quick break, after which we'll go across to the proceedings of the upper house. Thank you, Professor Agarwal, Professor Saha and Professor Vishandas, Mr. Riaz Thingna for joining in with your thoughts on the importance of this budget. We'll continue with our discussions on sector-specific allocations through the day today. So stay tuned. We are slipping into a very quick break. What is public debt? The difference between the borrowings and repayments during a year is the net addition to the public debt. Public debt is split into the internal debt, money borrowed within the country, and external debt, funds borrowed from non-Indian sources. Internal debt comprises treasury bills, market stabilization scheme, ways and means advance, and securities against small savings. What is GDP? GDP, or Gross Domestic Product, is total market value of all final goods and services produced in the country over a period of time, usually 1 year. Increase in GDP or GDP growth rate indicates the overall health of the economy. What is fiscal deficit? When government's revenues from various sources fall short of its entire expenditure, it has to borrow money to meet the shortfall. The excess of expenditure over receipts is called fiscal deficit. Higher fiscal deficit may result in higher rate of inflation.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, The Union Budget 2026-27, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, I rise to lay, with your permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure of the government for the year 26-27. The Fiscal Policy Statements 2026-27, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission again, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following papers under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement. Macroeconomic framework statement. Papers to be laid on the table, Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, I rise to lay on the table under Article 281 of the Constitution a copy each in Hindi and English of the following papers. A. Report of the 16th Finance Commission for the years 2026 to 31. B. Explanatory memorandum on the action taken on the recommendations contained in the report of the 16th Finance Commission. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 2nd February 2026. What is public debt? The difference between the borrowings and repayments during a year is the net addition to the public debt. Public debt is split into the internal debt, money borrowed within the country, and external debt, funds borrowed from non-Indian sources. Internal debt comprises treasury bills, market stabilization scheme, ways and means advance, and securities against small savings. निर्मला सीतारमन ने अपना बजट पेश कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश भल्ला जी एसोचैम से। सर, कैसे देखते हैं इस बार के बजट को? क्या आपकी उम्मीदें थी सेक्टर की बजट को लेकर, और किस तरह से बजट जो पेश हुआ है आने वाले सालों को लेकर किस तरह से बुनियादी ढांचे में सुधार होगा? एक तो
इस बार जो बजट था उससे सबसे पहले उम्मीदें की बात करें, बट बिफोर में एक लाइन में मैं कहूंगा इट इज ए एक्सेलेंट बजट, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जो जिस लाइन में मोदी जी कह रहे थे 2047 में विकसित भारत है, उसकी तरफ एक डायरेक्शन में बजट है। इससे पहले जब अब टैक्स की इसकी बात करें, बजट की बात करें, तो जो उम्मीदें थी बजट से, उम्मीदें इस बार दो टैक्सेशन की पहले बात आती है कि इनकम टैक्स और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। आप दोनों टैक्सों में ऑलरेडी रिफॉर्म्स आ चुके थे। नया इनकम टैक्स अभी आया है और जो जीएसटी में रिफॉर्म्स अभी आए हैं, इसलिए बहुत कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। पर इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स में एक अच्छी चीज आई है जनरल पब्लिक के लिए कि आपके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे जो हमें क्लेम मिलता था वो क्लेम पे टैक्स जीरो कर दिया। किसी का एक्सीडेंट होता है, क्लेम वो मिलता है तो वो जीरो करता है। और काफी टीडीएस और टीसीएस में रेट कम किए हैं, जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, पर कैश फ्लो इफेक्ट आएगा, पर टैक्स पे इफेक्ट नहीं आना। एज पर इनडायरेक्ट टैक्स की कंसर्न, इनडायरेक्ट टैक्स में इन्होंने काफी कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है, और इम्पोर्ट ड्यूटी कम उन चीज़ों पे की है जो कि एसेंशियल्स हैं, जैसे कैंसर की दवाई हैं और बाकी चीज़ों पे हैं, और मशीनरी पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है। दैट इज गुड साइन, दैट इज एज पर एज ओवरऑल एलोकेशन ऑफ बजट। नाउ क्वेश्चन कम्स एलोकेशन ऑफ बजट इज कंसर्न। इस बार जो कंसर्न था बेसिकली वो था ग्रोथ, और ग्रोथ पे इन्होंने फोकस किया है, क्योंकि अगर ग्रोथ की फोकस करें, एमएसएमई को 10,000 करोड़ का बजट दिया है, और उसके बाद एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, हर एक सेक्टर को टच किया है। बट वो जो फंड थे जिस हिसाब से इन्होंने काम किया उसको वेल मैनेज किया। तो आई विल से इट्स अ फैंटास्टिक बजट प्रेजेंटेड बाय देम। बाकी इसकी डिटेल जब भी फ्यूचर में और देखेंगे तो आई विल कम बैक। अगर हम बात करें, आपने कहा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस तरह से ये बजट पेश हुआ है वो एक रोड मैप की तरह है, तो आपका क्या लगता है कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत थी और उस पर दिया भी गया है, और कौन से ऐसे सेक्टर आपको लगता है जो आने वाले 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है? अगर मैं विकसित भारत किसी भी देश के विकास जो है इंडस्ट्री के बगैर नहीं हो सकती। इंडिया ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है, एग्रीकल्चर में बाद में टच करता हूँ, बट अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, उसका जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी है आपकी एमएसएमई। और एमएसएमई में इन्होंने काफी फोकस किया है इस बार, उसकी लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए, उसका फंड उसको आ जाए, और सेकेंडली जो उसके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उनके लिए काफी कुछ है इस बजट में। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें, एग्रीकल्चर में जैसे नारियल के ऊपर इन्होंने अभी स्पेशल स्कीम्स लाई हैं, तो वो एग्रीकल्चर और अगर इंडस्ट्री मिलकर चलें तो उस डायरेक्शन में इट्स राइट, अच्छा स्टेप है। जी, संसद टीवी को आपने समय दिया, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे राकेश भल्ला जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो बजट को अपना मार्क देते हैं कि आने वाले विकसित भारत का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है उसको हासिल करने के लिए ये रोड मैप की तरह होगा। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। जी हाँ, स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बजट पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा रिकॉर्ड 9वीं बार उन्होंने आम बजट पेश किया है। 3 विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी सहयोगी टीना झा भी हैं। Absolutely. Good afternoon, viewers, and welcome to all our guests. It's been a remarkable budget, especially because of the thrust that the finance minister put on the budget. She said it's not a continuity, but it's an effort to sustain India's growth momentum and perhaps put the country's economy on a higher growth trajectory. She said the focus is on boosting productivity, on an inclusive growth, which will take us closer to our vision of becoming a Viksit Bharat by 2047. जी हाँ, 3 विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजीव झा हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं पर्सोल इंडिया के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश कुमार सिंह हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर यशोवर्धन पाठक हैं, कमिश्नर जीएसटी और कस्टम बिहार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक वर्चुअल गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स लखनऊ यूनिवर्सिटी, आपका भी स्वागत है डॉक्टर मनोज कुमार। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा संजीव जी, क्या इस पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक एफटीए हुए हैं और हाल ही में यूरोपीय यूनियन के साथ भी एफटीए हो गया है,
उसकी छाया कहीं नजर आ रही है कि निर्माण पर भी जोर है और निर्यात पर भी जोर है? जी, आई थिंक मैं कहूँगा कि जो 3 मेजर पिलर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बजट के थ्रू देखना चाह रही है, पहला कि इंक्रीज कैपेसिटी सो दैट दे कैन काउंटर इम्पोर्ट challenges. The second part is the indispensability, means we make ourselves more dependent. People are more dependent on us. The world is more dependent on us. And I think the third is the strategic tie-ups. And within that strategic tie-up is FTA is one of the biggest achievement because it somehow also gives you edge on both imports and exports. So yes, I think it's a if this event would have happened after budget, it would have been a big highlight, but it happened before. But still, it's a very, very large, step, I think, and it's going to kind of give us a lot of risk-free, both import and export, and give us a lot of balance of payment and, deficit it will cover. Yeah. Absolutely. Thrust to increasing capex and reduction in fiscal deficit. That, in terms of the numbers, has been the big highlight. From where we started in 2014 to what the Modi government inherited to 2026-27, when we are talking about, it's been a continuity. So this budget, as experts have been pointing out since morning, cannot be seen in isolation. It's just one step closer to taking us closer to our roadmap to Viksit Bharat. Professor, your first thoughts on how do you look at this budget? It's a reform budget, it's a growth budget, or do you see it as a balance of all these factors which also incorporates sustainability? Yeah, it's a very good question, I would say. So if I would have to, sum up in single line, it's all budget about, then I'll call it a Viksit Bharat budget. So Pradhan Mantri, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, point of the reform rally, which he has mentioned earlier also, I think this budget has given a significant movement for that, the same rally. If you look at all the sectors, look at the fiscal consolidation, fantastic. 4% the target, 4.5% the target which the FM made, it has been made, and fiscal consolidation has been there. Look at other areas also, health, Ayurveda, health sector, a major, major improvement has been there in that investment. Now, if you look at this thing, these are not merely the short-term goals. These are the long-term goals which will make India very stronger and which is very important for the Viksit Bharat 2047 goal. Having said that, the capex, of course, 12 lakh crore, it's a big number. We'll see a big boost in the data centers also, which had been mentioned in the budget. Plus, if I have to mention it in a single line, this budget not only talks about a macroeconomics picture, making it a healthier, but also at a micro level. So the Kartabya path, which has been mentioned, 3 Kartabya, I think the government has taken a very pinpointedly approach on that, and definitely is going to show the impact at the longer level to the Indian economy. यशोवर्धन जी, ये भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। मेडिकल से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई है। दूसरी तरफ ये एक माना जा रहा था कि जिस तरीके से बेरोजगारी थोड़ा सा कम हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार विस्तार लेता जा रहा है, उस पर और ज़्यादा जो है व्यय किया जाएगा, उसका आवंटन बढ़ाया जाएगा। उसकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। आपका क्या कहना है? See, I would say it's a very, very futuristic और एक विजनरी बजट है। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है जिसमें हमारे ग्रोथ को भी और हमारे फिस्कल कंसोलिडेशन का भी, दोनों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। हम we are growing at 7.4% this year, and next year the targets are around 7%, 7.2%. So in a world which is geopolitically very unstable, things are every day different things are happening globally. This kind of growth momentum as a fastest growing economy, it's absolutely a very futuristic budget. जहाँ तक मेडिकल टूरिज्म का सवाल है, मेडिकल टूरिज्म का इंडिया हैज़ एन अमेजिंग पोटेंशियल। इंडिया के पास जो डॉक्टर्स की टीम है, जो हम लोग जितनी नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो एवरी ईयर हमारे मेडिकल स्कूल से निकलते हैं, वो एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड बियॉन्ड दैट जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है इंडिया में, दैट ट्रीटमेंट कॉस्ट इज़ डेफिनेटली चीपर व्हेन यू कंपेयर दैट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो डेफिनेटली एक उस एरिया में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को इस बजट में समझा गया है। हमारे केपिक्स एक्सपेंडिचर को 10% से ऊपर बढ़ाया गया है। एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स लाइक रेलवे में हाई स्पीड कॉरिडोर्स, इन्वेस्टमेंट्स इन द
EV बैटरीज एंड अदर फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को भी फोकस किया गया है। और जो एक लॉन्ग टर्म हमारा टारगेट है कि 2047 तक इंडिया शुड बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है उसको, उस टारगेट्स को हम मीट आउट कर रहे हैं। एंड वी हैव टू अप्रिशिएट दैट ये जो हम फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मीट आउट कर रहे हैं, ये डिस्पाइट जो हम लोगों ने टैक्स में इतने बड़े कट्स लास्ट ईयर किए उसके बावजूद है। देयर वर बिग रिफॉर्म्स इन इनकम टैक्स में। लास्ट ईयर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने मेजर स्लैब्स को इंक्रीज किया। जीएसटी में हमारे नवरात्र के आसपास मेजर चेंजेस हुए। इन सब के बावजूद जो कंजम्पशन बढ़ा है और हमारी जो ग्रोथ मोमेंटम है, आगे भी ये ग्रोथ मोमेंटम ऐसे ही सस्टेन करेगी। एंड as all my panelists, we are on the consensus that it's a budget where the growth is maintained futuristic with a target that India will achieve a Viksit Bharat goal by 2047. In fact, I recall, Pratibim, just ahead of the start of the budget session, the Prime Minister had said that India is on board the Reform Express. That term found mention even in the Finance Minister's speech. In many ways, this budget has been historic for the fact that this was Finance Minister Nirmala Sitharaman's 9th consecutive budget. She's surpassed many finance ministers in doing so. But most importantly, all of this has happened under one leadership. That's also something that makes her budget presentation stand out. But most importantly, given the fact that there are global uncertainties, so the global geoeconomic landscape is currently in turmoil, where India is an oasis of macroeconomic stability. You would recall the chief economic advisor having used this term specifically in terms of India's growth. So, Mr. Chai, I'll bring back the discussion to that Reform Express. In line with what the Prime Minister said, साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविजन किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। अभी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे संजीव जी, इसमें हम देख रहे हैं कि रेलवे पर कुछ ज़्यादा फोकस रहा है बजट, और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना अपने आप में क्या एक बड़ा बदलाव? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मतलब माइलस्टोन है इंडिया के लिए। अगर आप वर्ल्ड में किसी भी इकोनॉमी को देखें, दे हैव ग्रोन ओनली वंस देयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज रेडी। सो आई थिंक अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है, आप देखेंगे, चाहे रेलवे कॉरिडोर्स को देखें, चाहे आप नेशनल हाईवेज को देखें, चाहे आप नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स को देखें, ओवर द लास्ट 4-5 years देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ फोकस ऑन इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड नाउ it is visible, the impact of these infrastructure facilities visible in the output, the productivity, and also the business generation, also even the ports development. So I think they are basically developing all possible modes of transport where it can boost the trade and manufacturing, and that's our focus basically, to make the industrial, that new revolution, because that's where we have not been really doing so great. On the services side, yes, we have been doing great. I think now it has started showing up.
So that's why the capex also, you can see one of the good things in the budget I see. And to operationalize 20 new national waterways. And to operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. So this will be done by 2031 is what the government aims at. Training institutes will then again be set up as regional institutes of excellence in waterways space. There will be a ship repair ecosystem catering to inland waterways, which will be set in Varanasi and Patna. So alongside these connectivity projects, Professor, there is a proposal to set infrastructure risk guarantee fund. The finance minister said that she's proposing setting up of dedicated real estate investment trust as well to recycle the assets of central public sector enterprises. Break down this for our viewers to understand the significance and the importance of some of these announcements which cater to the infrastructure bit, which is different from connectivity and different from the infrastructure projects, but which will be a milestone in enabling investments, in enabling businesses in these sectors? Right. I think that's a very good question. I would see that, if you look at the infrastructure point, in economics, macroeconomics, generally we have something called the multiplier effect. For every rupee which the government makes, it has an implication on the development of the other projects also. So this government has taken a very good stand on this thing by taking into incorporation some of the major developments for the risk guarantee scheme for the infrastructure projects. Having said that, the Yuva Shakti, the point which has been Yuva Shakti budget, the term which has been used for it is for the same only. Because if you look at the infrastructure, which is the backbone for any economy, logistics, if you take into consideration, a lot has been investment made in this direction, because all the FTA, free trade agreement, if you talk about, which India has done with the foreign countries like European Union plus 8 other countries which we have made, 8 FTA which we have signed, this will need the backup. And for that backup team, for any company to invest, they need to have the risk-free environment for that. Basically, what we are trying to do is to look at the ecosystem, to make the ecosystem better so the investment can come in and that can augment in the export-oriented economy of the country. Second point which I would like to mention, that the capex which is generally done in the case of the road or the ports and others, like one of the data I would like to center that the airports in India used to be 74, now we have currently 164 airport, 2024 data says that. So to have the risk-free environment, to have the mental free without any hazard for the investment, we needed to have, and that was a need of the hour, and I think the Honorable Finance Minister has taken a very good stand on that. डॉक्टर मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वर्चुअली। डॉक्टर मनोज, काफ़ी बात हो चुकी है, थोड़ा सा लेट आप कनेक्ट हुए हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसको विस्तार देने का प्रयास किया गया है, लेकिन अगर बात करें, मैंने शुरुआत वहाँ से की थी कि जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन के साथ FTA हुआ है, ब्रिटेन के साथ FTA हुआ है, जोर निर्माण के साथ साथ निर्यात पर है और उसका असर नजर आता है। MSME को चैंपियन के तौर पर आगे बढ़ाने का जो प्रस्ताव रखा गया इस बजट के दौरान, और 10,000 करोड़ रुपए MSME ग्रोथ फंड जो है तय किया गया, कितना बड़ा बदलाव? बहुत बड़ा बदलाव है और प्रधानमंत्री जी ने पहले इस चीज को रेखांकित कर दिया था। इकोनॉमिक सर्वे के समय हम लोगों ने चर्चा भी किया था इस चीज को कि MSME हमारे ग्रोथ का एक बड़ा आधार आगे बनता चला जाएगा, और जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा FTA हुआ है उसका मुख्य आधार हमारा MSME ही बनता है। लेकिन MSME को भी अब मॉडर्नाइजेशन के साथ देखा जा रहा है। जो 10,000 रुपए का ग्रोथ फंड तैयार किया गया है पहली बार, तो मुझे लगता है कि इसको इस रूप में देखना चाहिए कि इसके साथ कनेक्टिविटी भी जोड़ा जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन भी जोड़ा जा रहा है, और जो लैक ऑफ अवेयरनेस होता है उसको भी कहीं ना कहीं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, जिसको एक मित्र, कारपोरेट मित्र के रूप में इसको रखा जा रहा है कि कैसे हम इनके जो कई बार नॉलेज गैप रह जाता है, अवेयरनेस गैप रह जाता है, उसको रखा जाता है, और इसके साथ किसको पोषित कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इंपॉर्टेंट इस रूप में हो जाता है कि हम टीयर 2, टीयर 3 सिटीज को अब हम वहां पर शामिल कर रहे हैं। बड़ा स्पष्ट कारण है उसका स्पष्ट कारण इस रूप में आता है क्योंकि आज के दिन अगर हम देखते हैं तो भारत का ग्रोथ इंजन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज बन रही हैं, यानी कि वो एक नया तरह का कंट्रीब्यूटर बन रहे हैं टू द ग्रोथ इंजन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो खाली हम MSME तक अपने को न रखें, MSME की जो परिधि है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही। पहला
जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से टीयर 2, टीयर 3 सिटीज। इसका एडवांटेज क्या होगा, यहां से जो आउट माइग्रेशन होता था या आसपास की विसिनिटी से जो आउट माइग्रेशन होता था वो रुकेगा, लोकल टैलेंट वहां पर रुकेगा, प्लस उनको जो टैलेंट चाहिए होगा, जो अवेयरनेस चाहिए होगा, मैन पावर चाहिए होगा, उसके लिए जो 5 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जा रही है जो इंडस्ट्रियल हब के इर्द गिर्द होंगे। एक और एडवांटेज यहां पर हमको एमएसएमई के रूप में दिखाई पड़ता है। 200 जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स थी वो कहीं ना कहीं यूं कह लीजिए कमजोर पड़ गई थी या गायब हो गए थे। उन क्लस्टर्स के रिवाइवल से फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एज ओल्ड ट्रेडिशनल जो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट हुआ करता था वो और पोषित होगा। यानी कि एमएसएमई को हम देखते हैं तो कई रूपों में हमको इस बजट में समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी कुछ क्लस्टर्स इधर हैं, कुछ क्लस्टर उधर है बजट में, लेकिन एमएसएमई हर तरफ दिखाई पड़ता है। और दूसरा, अगर आप देखते हैं कि जिस प्रकार का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, उसमें एमएसएमई जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है रिसर्चर्स के लिए, हम जैसे रिसर्चर लिए बड़ा चैलेंज ये हो गया है कि हर जगह हमें एमएसएमई तलाशना होगा, क्योंकि बिना एमएसएमई के भारत का जो ग्रोथ इंजन है वो आगे उस रूप में नहीं होगा। यूं समझिए, बड़े पत्थरों के बीच में छोटे छोटे जो गैप्स है वो कौन फिल करेगा। आज का बजट ऐतिहासिक है। इसमें देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स
भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले, इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमई तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमई को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में
टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया बजट के बाद, और बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने सार बताया है बजट का। उसमें जिन चीज़ों पर फोकस किया गया, संजीव जी, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा अपने आखिरी संबोधन में, जो अंतिम संबोधन की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने कहा युवा शक्ति बजट है। अब युवा शक्ति को लेकर उन्होंने बताया कि स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी पर हमारा फोकस है। एक तरह से अगर हम देखें, समझें, तो जो एम्प्लॉयमेंट लिंक ग्रोथ की बात की जा रही है, स्किल बेस्ड हायरिंग पर जोर दिया जा रहा है। कैसे हम बजट के जरिए इसको समझें कि जो बजट है वो जॉब क्रिएशन को स्लोगन से निकालकर एग्जीक्यूशन की दिशा में लेकर जा रहा है? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। See, one of the most important struggle as a country we have is we have a huge youth population, which is around 26 to 30 crore, which counts to about 20% of our population. And I think the whole idea is that any country can grow and sustain the GDP growth we are looking at only if we are able to provide enough employment to these youth. So I think now the budget theme is that how do we kind of create growth. So the growth is being addressed by many reforms, etc. What is important is to see that how growth will eventually convert into the employment. I think that's where the success will happen and sustainability will come. So I think in order to have more employment, I think all the reforms which have been announced even previously and even in this budget, for example, you look at the entire data center, which has been made tax free now for like for next 20 years. So it will attract lot of investment in India. There is a GCC boom, where lot of global shared services centers are being, increasing now. They were almost 1700, they may go up to 2500, adding to almost 6 lakh jobs. Then if you look at one of the themes in this budget is the tier 2, tier 3 cities. And I think we heard the professor on our panel
that what will happen is that today we are going to utilize the talent in these tier 2, tier 3. Already it has been identified by many companies, but now I think it has been made very, very clear that instead of those people coming to the tier 1 cities, we will try and take employment to tier 2, tier 3, and this will hold them there and it will give them a lot of employment. And also all other reforms, for example, the health sector, the sports sector, the MSME. Now MSME is going to be one of the major employment creator, because MSME is almost 35 to 40% of our overall GDP and is the backbone for any economy for that matter. So I think all this put together, clearly there is a focus that we have to convert growth into employment, and for that we need to bring more business, more reforms, more simplicity to do business or ease of doing business, and also the skill development. We have to skill our people so that they can be absorbed in those reforms, in those growth, and eventually they both marry well with each other and we eventually get the outcome. So definitely employment and this Yuva Shakti is one of the most important theme and success factor for us in years to come. राकेश जी, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे मदर ऑफ ऑल डील FTA जो हुआ है यूरोपीय यूनियन के साथ, क्या उसको देखते हुए भी डिजाइन किया गया है इस बार का बजट, उस पर हम चर्चा कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने भी उस तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा कि इस डील का लाभ भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मिल सके, उसका प्रावधान इस बजट में किया गया है। जी सही कहा आपने। जो मदर ऑफ ऑल डील्स जो हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें देखिए इसमें कई बातें देखनी पड़ेगी। जो हमारा अभी जो अमेरिका के साथ अगर हम उसको देखें, जो टैरिफ वॉर हमारा चल रहा, उससे भी कई तरीके से हमारा जो ये डील है उससे हमें निकलने में काफ़ी मदद करेगी। हम आर्थिक दृष्टि से अगर इसको देखें तो हमारा जो निर्यात क्षेत्र है, एक्सपोर्ट सेक्टर, उसको भी बहुत एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वो इससे थोड़ा प्रभावित हुआ था, तो इससे एक नई दिशा मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। और जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि युवा शक्ति बजट है। ऑफ कोर्स ये हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। भारत में एक युवाओं की जो प्रतिभा है ये हमें 2040 तक अवेलेबल है और भारत इसको पूरे अच्छी तरीके से नियोजित करके एक सही मार्गदर्शन में जाना चाहता है। उसके लिए ये जो डील है, मदर ऑफ ऑल डील है, ये बहुत ही मुझे लगता है क्रियान्वित रहेगा और बहुत ही लाभदायक रहेगा। दूसरी बात मैं जो जोड़ना चाहूँगा, इस डील में जो लेदर सेक्टर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, वो तो है ही। उसके अलावा जो ऑरेंज इकॉनमी की हमने बात की है, डेटा सेंटर्स की बात की है, ऑरेंज इकॉनमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आज युवाओं का जो इंटरेस्ट है, जो उनका जो झुकाव है, हम देखते हैं विजुअल इफेक्ट्स की तरफ, क्रिएटिव की तरफ इफेक्ट है, और इसमें उनको काफ़ी बूम देगा, एक उड़ान देगा। जो प्रधानमंत्री जी ने इसके वर्ड यूज़ किए, उनको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा, क्योंकि उसी ऊर्जा के साथ उसमें भी काम करेंगे। और जो हमने टैक्स हॉलीडे दिया है 2047 तक, जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें भी काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो ऑरेंज इकॉनमी जो हमारा ऑरेंज इकॉनमी है, ये जो लेदर एक्सपोर्ट्स जो होंगी और जो डेटा सेंटर्स का जो बूम आएगा, इससे विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है उसे हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे और भारत एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ निश्चित ही 2047 से इस कदम से बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सकता है। और यशोवर्धन जी, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, शुरुआत ही की उन्होंने कि फिस्कल डेफिसिट कम करने और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये दोनों फोकस रहा है बजट में भी और सरकार की प्राथमिकताओं में भी। कैसे समझे जो पूरे टैक्स को लेकर जितने रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, जिन भी कदमों का जिक्र किया जा रहा है, जो बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में एक तरह से मैं कहूँ क्वाइटली लेकिन इफेक्टिवली रोल कैसे निभाता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक मैंने सुना उनके संबोधन में, उन्होंने एक रिफॉर्म एक्सप्रेस करके कहा कि अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस के ऊपर देश रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह चल रहा है और 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, उस लक्ष्य को हमें पूरा करना है। डेफिनेटली उस लक्ष्य में सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस और फिस्कल कंसोलिडेशन, हमारी जो हमारे मेन इकोनॉमिक के पैरामीटर्स हैं, उनको हमें पूरा करना है। और ये जो बजट है, ये बजट उसी ध्येय को लेके उस दिशा में आगे चल रहा है। बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं इस बजट में जो हमें उस डायरेक्शन में ले जा रहा है। जैसे आप क्लाउड सेंटर्स को देखें, जो फॉरेन की AI से रिलेटेड जो सबसे विश्व की बड़ी कंपनियां हैं, टॉप 5, उनके जो डेटा सेंटर्स हैं वो कैसे इंडिया में आएँ, और उन डेटा सेंटर्स को एक टैक्स हॉलीडे दिया गया है। टॉप 5 उसमें अमेजॉन है, उसमें गूगल है, उसमें बड़ी कंपनीज हैं। मेडिकल टूरिज्म एक अपने आप में जो 5 जगह स्टेट के साथ और प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मेडिकल टूरिज्म को 5 हब्स बनाने की बात कही गई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विजनरी स्टेप है।
इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट वर्ल्ड ओवर बहुत चीप है और इसको हमें कैसे ग्लोबल मार्केट में इसको हमें सेल करना है और इसको हमें इससे न सिर्फ हमारी फॉरेन एफडीआई एफपीआई वो सब इंक्रीज होगी बस बल्कि इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के हब्स, सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स, जो फास्ट रेल नेटवर्क कॉरिडोर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक वर्ल्ड विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बनाना चाह रहे हैं और उस दिशा में रोज आगे बढ़ रहे हैं, उसी से वही एक बदलते भारत की, एक बढ़ते भारत की बुनियाद है। और उस दिशा में बहुत से डायरेक्शन मिलेंगे आपको, जैसे मदर ऑफ ऑल डील्स की अभी हम बात कर रहे थे। हमारी जो चैलेंज हमें यूएस इकॉनमी से आ रहा है, यूएस की तरफ से, तो हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं, हमारे जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हैं, उसको अब यूरोप में एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी जो ईयू है एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी जो हम हैं, दोनों के बीच एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। उसे सही शब्दों में कहा गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। तो इन सब का इम्पैक्ट भारत के ग्रोथ पे, भारत के ग्रोथ मोमेंटम पे, भारत के फिस्कल कंसोलिडेशन पे, हमारी जो जिस दिशा में एक डेवलप्ड इंडिया की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, हर दिन उसमें चीज़ें आ रही हैं। और एक विजनरी बजट, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट है ये, एक बहुत ही विजनरी बजट है जिसमें आपको बहुत सी मॉडर्न चीज़ों का समावेश किया गया है। आप जो सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि उसमें ईवी हो गया, उसमें सेमीकंडक्टर्स हो गई, उसमें और भी जो सोलर से रिलेटेड इशू, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको टैक्स हॉलीडेज़ दी गई हैं। और ट्रेड को भी जिस तरीके से, बिकॉज कोई भी कंट्री अगर वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर की तरफ बढ़ता है तो उसमें ट्रेड का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कैसे सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोर्ट को कैसे बूस्ट करना है SEZ और बाकी माध्यम से, इन सब का इस बजट में प्रावधान है। अलग अलग जगह विस्तार से बताने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, बट अदरवाइज इट इज़ अ ऑल एनकम्पसिंग बजट, अ बजट विच विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लीप, as I say कि नेक्स्ट बाई 2030 और लेट्स से 2035 जो हमारी ग्रोथ मोमेंटम है, उस ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रहे। और साथ में भी जो हमारी फिस्कल कंसोलिडेशन है, जो हमारा केपेक्स एक्सपेंडिचर है, जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम 2030 तक डेट टू जीडीपी रेशियो को हम 50% तक ले आएंगे। और ऑलरेडी जो हम उसको हम जिस स्पीड से कम करना है, इस साल वो 54 या 53 के आसपास रहेगा, एंड बाय 2030 वी वुड बी अचीविंग दैट टारगेट। So all in all, in this, it's a very visionary budget and a budget in the right direction and a very balanced budget. मनोज जी, जब आपसे बात कर रहे थे MSME पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, बीच में प्रधानमंत्री का वक्तव्य आ गया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। और जिस बात को यहाँ पर हम उठा रहे हैं, जिन बिंदुओं को, उस और प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा विस्तार से इशारा किया है। तो MSME की बात करें, उसको थोड़ा सा नई शक्ति देने का प्रयास किया गया है। उद्योग जगत को जो है और ज्यादा बेहतर और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर MSME से सरकारी खरीदी बढ़ाई जाएगी, इस पर जो है जोर दिया गया है। वस्त्र उद्योग में रिफॉर्म लाए जाएंगे और मेगा टेक्सटाइल पार्कों का निर्माण भी होगा और खेलों के सामान बनाने पर भी जो है भारत आत्मनिर्भर बन पाए, उस और भी जो है हम लोग काम करेंगे। ये एक दिशा रही इस पूरे बजट की। आप इस दिशा को कैसे देखते हैं? अनम्यूट कीजिए, म्यूट हैं आप। मैं कह रहा था कि आप इस बजट में जहां देखेंगे आप MSME की झलक पाएंगे। उदाहरण के तौर पर AI का मैक्सिमम एप्लीकेशन, ठीक है, बड़े कारपोरेट से तो होना ही होना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर और MSME उसमें शामिल होता है। दूसरा, अगर देखते हैं कि जिन इंडस्ट्रीज को इसमें हाईलाइट किया गया है, मैं नाम ले रहा हूं कि बायोफार्मा शक्ति में भी आप पाएंगे कि MSME सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। टेक्सटाइल में भी अगर आप जाएंगे तो टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है कि बिना MSME के ये सेक्टर अपने को पूरी तरह से स्थापित कर नहीं पाएगा।
और चूंकि अब इस समय हमारे पास एक मजबूत आधार है, मजबूत सपोर्ट है, मजबूत इकोसिस्टम है, इसलिए एमएसएमई का जो उद्गम फिर से हो रहा है। और एक बात जो शुरू में उसमें छूट गई थी वो ये था कि 200 स्थानों पर जहां पर एमएसएमई हुआ करते थे, जिसको इंडस्ट्रियल क्लस्टर कहा गया, वो एमएसएमई के क्लस्टर थे, वो खत्म हुए। मान लीजिए कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कानपुर बात करते हैं, अगर हम इसी प्रकार से वाराणसी की बात करते हैं, कई और हमारे इस प्रकार के क्षेत्र हैं, अब उनको रिवाइव करना, नए कलेवर में रिवाइव करना। तो जो स्थापित है वो जो पुराने थे उनको रिवाइव करना। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जो मामला आता है और स्पोर्ट्स गुड्स आप खुद जिक्र कर रहे हैं, और ये हमारे यहाँ का एक मजबूत, आपको बताता हूं कि एक्सपोर्ट आइटम भी है हमारे ये स्पोर्ट्स गुड्स का। और जो हमारे यहाँ खेलों के है, पिछले बजट में इसकी चर्चा काफी हुई थी, और अब उसको और कलेवर में जाना है, वो है टॉयज का। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरा अगर हम देखते हैं, ये तो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, एमएसएमई का हम देखते हैं तो उसमें ट्रेडिंग भी शामिल है या सर्विस सेक्टर भी उसमें शामिल है। जिस प्रकार का हमारे यहाँ आज के दिन, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में हम चर्चा करते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, वहां टूरिज्म का हमें प्रमोट करना है। हु विल प्रमोट टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट? इट इज नॉट द कॉर्पोरेट। टूरिज्म इन इंडिया इज बीइंग लार्जली प्रमोटेड बाय एमएसएमई सेक्टर। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जो आज टूरिज्म का हब बन चुका है, कल्चरल टूरिज्म कह लीजिए, रिलीजियस टूरिज्म कह लीजिए, उसका हब बन चुका है, वहां पर कौन सबसे ज्यादा है? एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा आ रहा है। फिर इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कई और क्षेत्रों में, मान लीजिए द्रोण दीदी की जैसे पहले हुई चर्चा, या यहां पर एआई का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में होना है, हु विल प्रोवाइड दिस सपोर्ट? इट इज द एमएसएमई सेक्टर। कहने को एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा, लेकिन हु इज गोइंग टू बी द फैसिलिटेटर? फैसिलिटेटर डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द एमएसएमई सेक्टर। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि तमामों और एक्टिविटीज है केंद्र सरकार लॉन्च कर रही है और स्टेट के माध्यम से भी लॉन्च कर रही है। तो हु आर द सपोर्टर ऑफ दैट, हु कैन ट्रांसलेट दैट टाइप ऑफ थिंग इनटू एक्शन? ये सीधी सी बात है, एमएसएमई सेक्टर। इसलिए एमएसएमई सेक्टर कोई आज के दिन चैरिटी नहीं रहा, दे आर द क्रिटिकल कंपोनेंट जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित भारत में ले जाने का काम करेंगे। नंबर एक, आप देखेंगे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम आगे बढ़े, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि एमएसएमई सेक्टर को हमने प्रमोट किया। नतीजा क्या हुआ? आज जो हम लोगों के पास डेटा छन छन के आ रहा है, ऑफिशियल डेटा तो अभी नहीं आया है, वो सेंसस से आएगा, कि आप देखें कोविड के बाद से उत्तर प्रदेश से अन्य जगह का जो आउट माइग्रेशन होता है उसमें कुछ कमी आना प्रारंभ हुआ है। यानी कि जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान था और आज भी है, वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल, तो उसमें एमएसएमई भूमिका निभा रहा है, नंबर एक। दूसरा, तमामों और सेक्टर्स जो इमर्ज कर रहे हैं, बहुत सेक्टर्स खोले हैं आज। मान लीजिए क्लाउड के लिए बात होती है, तो क्लाउड के लिए बात होने में ठीक है, कारपोरेट्स आगे आएंगे सबसे पहले, लेकिन अल्टीमेटली कौन ट्रांसलेट करेगा उसको एक्शन में? दे आर गोइंग टू द एमएसएमईज। तो हमें एमएसएमई सेक्टर को बहुत करीने से समझने की आवश्यकता है कि वो कहां कहां फिट हो रहे हैं। यूं समझिए, भारत का जो अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमें मजबूत करना है, तेजी से बढ़ाना में कारपोरेट्स भी चाहिए, बड़े उद्योग भी चाहिए, लेकिन बिना एमएसएमई के कनेक्ट दोनों के बीच, पब्लिक के बीच में, स्मॉल होल्डर्स, लैंड होल्डर्स, स्मॉल ट्रेडर्स और उनके बीच में बिना एमएसएमई के कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मेरा बार बार यही आग्रह रहेगा कि एमएसएमई को हम हर बार नए रूप में देखेंगे तो हमें नए भगवान इसमें दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। और संजीव जी, थोड़ा सा अगर मैं हायरिंग और ग्रोथ रियलिटी के हिसाब से बजट को समझना चाहूँ, तो बजट स्पीच में जीडीपी ग्रोथ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बताया गया है कि जॉब का नेचुरल ड्राइवर यही है। अब ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो एचआर और रिक्रूटमेंट जो फर्म्स हैं वो क्या देख रही हैं? क्या कंपनीज अब एक तरह से मैं कहूँ कि एक्सपेंशन और हायरिंग को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं, इसको कहा जा सकता है? आई थिंक जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो फोकस है, और एवरीथिंग इज डन टू इंश्योर दैट आवर यूथ गेट एम्प्लॉयमेंट। सो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, इट्स अबाउट 6 to 8% largely, but if you look at the unemployment rate of the youth, it's maybe in double digits, maybe 11-12%.
सो जो सबसे बड़ी बात यह है कि दो चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट के लिए. पहला, देयर हैज़ टू बी एन अपॉर्चुनिटी, which means there has to be an industry who can employ them, and the secondly you need to have that skill to be part of that job in that industry, right? तो आई थिंक फोकस दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है इस वक्त कि पहले ग्रोथ को क्रिएट किया जाए. जो ग्रोथ हमने क्रिएट की इस बार, दैट वन ऑफ द ड्राइवर इज ऑफ कोर्स द कंजम्पशन केपेक्स, एंड जो MSME में अब बूस्ट है, जो अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कोशिश कर रहे हैं करने की, जो FTA हमने किया है, इस सबसे क्या होगा, इस सबसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी. तो डेफिनेटली जो हायरिंग ट्रेंड है वो बढ़ेगा. आज इंडिया विल बिकम ए कॉम्पिटिटिव प्लेस फॉर पीपल टू बी प्लेस बेस्ड आउट ऑफ हियर. जैसे कि हमने अपनी लीडरशिप पोजीशन सॉफ्टवेयर में ली है, ऐसे ही हम धीरे धीरे वो लीडरशिप पोजीशन हर स्पेस में लेंगे. आज सिर्फ सर्विसेज में ही नहीं उसका टारगेट है, इवन हम मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहते हैं. हम प्लेन्स भी बनाना चाहते हैं, हम शिप्स भी बनाना चाहते हैं, हम डिफेंस के सारी चीज़ों को बनाना चाहते हैं, हम हर चीज़ करना चाहते हैं. और उसके लिए ही ज़रा फोकस है कि यही वो सस्टेनेबल ग्रोथ है जो हमें एम्प्लॉयमेंट देगी. तो आई थिंक आने वाले टाइम में ये जो बजट है इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, मेरे हिसाब से इट विल जनरेट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड वी हैव टू ऑल्सो इंश्योर एट द सेम टाइम दैट वी प्रोवाइड दो स्किल्स. सो आई थिंक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है साथ के साथ जाना. अदरवाइज यू नो we may, like Professor said, that it's a demographic dividend for us. We have one of the largest country which has a youth bulge, we call it. सो आई थिंक इसको अगर हमें यूटिलाइज करना है तो आई थिंक ये दोनों को हमें मैरी कराना पड़ेगा, और वही इस बजट का बेसिकली टारगेट है. प्रोफेसर राकेश, यहाँ पर आधारभूत ढांचा लगातार मजबूत हो रहा है देश का, उसमें निवेश भी किया जा रहा है और इस बार भी उस बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है. उसको जोड़ते हुए शिक्षा में इस हॉस्टल जिले, देश की सभी जिलों में एक एक हॉस्टल बहुत कारगर साबित होगी. ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कदम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों सरकारों के साथ मिलकर राज्य सरकारों की एक चैलेंज रूट में राज्य सरकारों को उसमें से प्रतियोगिता करना पड़ेगा, शर्तों को पूरा करना पड़ेगा. 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे, यानी इसमें से अनेकों यूनिवर्सिटी आएंगे. 5 यूनिवर्सिटी टाउन जो उस राज्य की इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक क्लस्टर के पास होगी. इसमें रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, ये सारे की एक इकोसिस्टम बनेगी. ये दुनिया की अर्थनीति में प्रमाणित तथ्य है. अर्थनीति को बड़ा करना है तो उसको एक नॉलेज पॉइंट के साथ जोड़ना पड़ेगा. भारत की अर्थनीति नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की और बढ़ रही है. ये 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, इसकी सहयोगिता राज्य सरकार के साथ मिलकर किया जाएगा. ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. वैसे ही हमारी 15,000 स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ABGC की जो एक नई राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हुई है उसकी अगुवाई में, उसकी इसे जोड़ते हुए 15,000 स्कूल्स में ABGC की पढ़ाई की जाएगी, कोर्स खुली जाएगी. उसकी हायर स्टैंडर्ड्स की कोर्सेज के लिए 500 कॉलेज में ABGC की कोर्सेज चलाया जाएगा. ये ऑरेंज इकोनॉमी को देश में, हमारे देश में गुणवत्ता की, सृजनता की, कला की कोई कमी नहीं है. उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए ये 15,000 स्कूल्स में कोर्सेस और 500 स्कूल में, 500 कॉलेजेस में इस प्रकार के कोर्स, ये बहुत कारगर साबित होगी. पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID देश में अनेक स्थान पे काम कर रहा है. पूर्वी भारत में NID नहीं था. केंद्रीय बजट में इस बार पूर्वी भारत में NID स्थापित करने के लिए घोषणा किया गया है. ऐसे 4 जगह पे एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी को और आगे बढ़ाने के लिए 4 जगह पे टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अपग्रेड और नया सेटअप किया जाएगा. एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बार बजट में किया गया है
जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए जाते थे उनको जाने की पहले 5% की टैक्स देना पड़ता था। आपने जितना रेमिटेंस उनको देना पड़ता था, जिनका उनको फीस वगैरह उनके खर्चे के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता था, उसमें 5% टैक्स लगती थी। इसको सरकार ने इस बार घटा के 2% किया। उसमें हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाके एडवांस रिसर्च करना, पोस्ट डॉक्टरल करना और जनरल एजुकेशन में जाना और सुलभ हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण घोषणा इस बार बजट में किया गया है। एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, E2E स्टैंडर्ड कमिटी बनाई जाएगी, जिसमें विकसित भारत की लक्ष्य को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवेन AI एम्पावर स्कूल एजुकेशन SCRT को इन्वॉल्व करते हुए एकदम एक नई एजुकेशन इकोसिस्टम, नॉलेज इकोसिस्टम देश में कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए E2E स्टैंडर्ड कमिटी, एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी। इस बार NCERT हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी है, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी हो चुकी है। इस बार बजट एलोकेशन में NCERT की जो परंपरागत बजट होती थी उसमें से 14% की ग्रोथ हुई है। ये NCERT हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रमुख इंस्ट्रूमेंट हमारे NCERT है। इसको गति देने के लिए NCERT के बजट को भी बढ़ाया गया है। अन्य 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आज यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। देश में जिस प्रकार की बच्चों के ऊपर डिस्ट्रेस होने की प्रायोरिटीज दिया जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंटल हेल्थ के बारे में खूब चर्चा की गई थी। आज बजट में उस विषय को आगे ले जाने के लिए दक्षिण में बेंगलुरु में निम्हांस एक बहुत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके काम कर रहा है। देश में दूसरी निम्हांस बनाने के लिए भी बजट में अनाउंस किया गया है। मैं मानता हूँ बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ के लिए इस प्रकार के एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत कारगर साबित होगी। ऐसे और 2 संस्था के बारे में उल्लेख किया गया। नाइपर देश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो अभी के 7 नाइपर है उसको अब अच्छा किया जाएगा। उसके अलावा 3 नाइपर और खोला जाएगा। इसमें देश में 10 नाइपर हो जाएंगे। ये भी एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। टूरिज्म पे पहले हमारे देश में IIHM संस्था दायित्व में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अनेक राज्यों में सरकार की ओर से काम कर रहा है, अच्छे कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है। इसको थोड़ा अपस्केलिंग करते हुए सरकार ने इस बार बजट में निर्णय किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोली जाएगी, उसको अपग्रेड किया जाएगा, इसकी मानक और बढ़ेगी, उसकी कोलैबोरेशन भी बढ़ेगी। ये सब निर्णय भारत की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं बीजेपी के राष्ट्रीय जिस तरह से सभी सेक्टर काम कर रहे हैं, सभी सेक्टरों में बजट में भी ध्यान दिया गया है, वहीं सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टरों में EV सेक्टर है और हम बात करें तो सोलर की बात करें, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार भी इस पे लगातार काम कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्वोटेक के MD। सर, कैसे देखते हैं रमन भाटिया जी आप इस बजट को, और किस तरह से देखते हैं जो सोलर एनर्जी की हम बात करें, EV की हम बात करें, तो आने वाला भविष्य इसी सेक्टर का है। तो जो बजट एलोकेशन हुआ है उसको कैसे देखते हैं, और विकसित भारत का जो रोड मैप है 2047 का, उसको देखने के लिए आज जो ये बजट एलोकेशन है उसको किस तरह से आप देखते हैं और कैसे आंकते हैं? बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है इस बार, क्योंकि वो भी समझ रही है कि एनर्जी में जो उन्होंने बहुत फोकस किया है पिछले टाइम में, अब उसका पूरा प्रेशर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो इस टाइम इंफ्रा पे बहुत जोर है और इंफ्रा को स्टेबल करने के लिए एनर्जी स्टोरेज का बहुत बड़ी मांग है और उसकी जरूरत भी है। तो उसके लिए लिथियम बैटरीज के इम्पोर्ट पे
काफ़ी सारा काम किया है गवर्नमेंट ने, कुछ ड्यूटीज़ में एग्जेम्पशन देने की कोशिश हो रही है। प्लस जो मुझे लगता है वो ये है कि एग्जीक्यूशन, ये जो बजट है वो मोर फॉर एग्जीक्यूशन है, नॉट मोर फॉर इंसेंटिव और सब्सिडी। तो अगर हम एग्जीक्यूशन पार्ट को देखें तो उस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। अगर हम एग्जीक्यूट ठीक से कर लें ग्राउंड लेवल पे तो 2047 की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो हो सकता है वो 2047 हमारे ज़िंदगी में 2035 में आ जाए। इस दिशा में काम हो रहा है। जी, जिस तरह से आज की दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, वहीं अगर आप सोलर की बात करें, हम ईवी की बात करें, तो दोनों में बैटरीज का बहुत इंपॉर्टेंस रोल आ जाता है। वहीं हाल ही में एक चर्चा भी रही है, बात करें सिल्वर की, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा है। और सिल्वर का रोल जो हाल ही में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि किस तरह से जो प्राइसेस हैं बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन हुए हैं। उसको देखते हुए क्या चैलेंजेस आपने महसूस किए हैं कि आने वाले समय में होने चाहिए, और उसके लिए सरकार का स्टेक क्या है? जो सिल्वर है वो अपने आप में कोई डायरेक्टली कोई यूज नहीं होता कि सिल्वर लगाया उससे गाड़ी बन गई या बैटरी बन गई। सिल्वर का यूज होता है कंपोनेंट्स में, राइट। तो कंपोनेंट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाए, मेक इन इंडिया किया जाए, और जितने भी सेमीकंडक्टर हैं वो भी इंडिया में बनाए जाएं। इस पे काफ़ी जोर है। अगर वो ऐसा हो जाता है तो इंडिया बहुत जल्दी सेल्फ रिलायंट हो जाएगी और बहुत तेजी से हम लोग ग्रो कर पाएंगे। जी, अगर हम बात करें, आपने बोला कि चिप की आपने बात करी यहाँ पे, तो उसको लेकर जिस तरह से प्रोत्साहन सरकार लगातार दे रही है, और आत्मनिर्भर होने की अगर हम बात करें तो कितना तेजी से आपको दिखाई दे रहा है कि आने वाले वर्षों में हम सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? मैंने आपको जो बोला मैं उसी बात को फिर से रिपीट करना चाहूँगा। एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट नाउ। जो बेसिक प्लानिंग थी, जो बेसिक सब्सिडीज इंसेंटिव्स हो गए, अब अगर हमें फैक्ट्री लगाने के लिए कोई इंसेंटिव दे दिए गए हैं या कहा दिया गया कि आपको मिलेगा, तो अब पहले तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो वो जो हम प्लान कर रहे हैं कि वो 2 साल में होगा या 3 साल में होगा, हम उसको कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, कितना हम AI को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें IT, AI इन सब का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो अगर हम एग्जीक्यूशन में ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को बहुत तेजी से रोल आउट करना शुरू कर दें और गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ये काम कर लेंगे। संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बात लगे, थैंक यू। तो ये थे, इन्होंने बताया, सर्वोटेक के रमन भाटिया जी सर्वोटेक के MD हैं, और उन्होंने बताया किस तरह से जो आने वाला वर्ष है वो सोलर एनर्जी और EV सेक्टर का रहने वाला है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। आने वाला समय ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा। जी हां, विकसित भारत के विजन के साथ पेश हुए बजट 2026 में एक चीज तो साफ है कि जो फोकस है वो रिफॉर्म, रफ्तार और राहत पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बजट आम टैक्स पेयर की जेब तक राहत पहुंचा पाएगा? इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन TCS में कटौती, मैट में राहत, नया इनकम टैक्स एक्ट और मार्केट से जुड़े कई बड़े फैसले। तो आज की चर्चा बजट 2026 में जानने की कोशिश करेंगे क्या बदला टैक्स पेयर्स के लिए। और इस अहम चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान भी जुड़े हैं। टैक्स लॉ और मार्केट के सबसे भरोसेमंद नाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर SC अग्रवाल जी, CMD हैं SMC कैपिटल लिमिटेड के। हमारे साथ मौजूद हैं संजय शरण जी, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड CGST। साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं 2 बहुत खास मेहमान। GS पन्नू जी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट इनकम टैक्स एपिलेटेड ट्रिब्यूनल यानी ITAT के, और साथ ही मुकेश भूटानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर BMR लीगल से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली और मेरे साथ है मेरे सहयोगी, और मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। और इस चर्चा को हम फिर एक बार आगे बढ़ाते हैं। बजट पेश हो चुका है, वित्त मंत्री ने अपना 9वां बजट पेश किया और इस उपलब्धि के लिए भी पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। लेकिन बजट में क्या कुछ खास है? 48 लाख करोड़ रुपए का जो ये बजट है, और अगर इसमें हम इंफ्रा की बात करें तो पिछले साल 11.2 लाख करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा गया था, अलोकेट किया गया था। और इस बार जो एक तरह से जो विकास की जो रफ्तार है, जो गाड़ी है, उसे किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए, तो 22 नए जलमार्ग विकसित करने का प्रावधान किया गया है और 7 हाई स्पीड कॉरिडोर, 200 से ज्यादा लीजेंडरी, एक तरह से इकोनॉमिक वो भी उन्होंने तय किया है। तो अग्रवाल साहब हमारे बीच में हैं और इस सवाल को थोड़ा सा और आपके साथ साझा करते हुए हम आगे बढ़ें। सरकार ने खास तौर पर एक ध्यान दिया उसने सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मेटल पर,
और इसे लेकर के उसने बाकायदा भारत में एक कॉरिडोर भी जो है उसको आइडेंटिफाई किया, जिसमें उड़ीसा आ जाता है, आंध्र आ जाता है, केरल आ जाता है। तो ये जो कुल मिलाकर विजन है, जिसके कनेक्शन कई बार चीन से जुड़ जाते हैं, जिसके कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत गहरे जुड़े हैं, तो इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एआई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो चाइना है उनका बहुत लीड रोल है। बिल्कुल 90% मार्केट शेयर उनका है। और यूएस, इंडिया, वो सबको एक तरीके से ब्लैकमेलिंग कह लीजिए या डिक्टेशन कह लीजिए, वो करता रहा है। तो इंडिया इसके लिए अभी जो 4 स्टेट जहां ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का माइंस हैं, उसको एक स्पेशल कॉरिडोर और स्पेशल फोकस करके उस पर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग और इंसेंटिव देना चाहता है, सो दैट हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर पिछड़े नहीं रहें और हम आगे बढ़ें। और यही कोशिश है, इसलिए इस बजट के अंदर प्रावधान हुआ है, इस पर स्पेशल फोकस दिया गया है। 4 स्टेट को आइडेंटिफाई किया है, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड वन मोर स्टेट। तो उसमें वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा उसके ऊपर स्पेशल फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, और इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आज ये एआई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए मिसाइल्स टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सब जगह रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होता है। और इसके बगैर आगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अपने मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स, सब जगह इनका यूज है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर फोकस दिया है। मतलब नई दुनिया में एंट्री लेने के लिए इस पर अपना दबदबा जरूरी है। बिल्कुल दबदबा जरूरी है। हम यदि इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट की तरफ से है नहीं, यदि हम इस पर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो हमें अपने को इस चाइना या किसी और कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहें। जिसकी एक्सपर्टिज्म है उसको हम कोलाबोरेशन में एज ए पार्टनर ले लें प्रोडक्शन के अंदर, और वहां पर भी इंसेंटिव दिए गए हैं, वो हमारे साथ कोलाबोरेशन करेगा। बिल्कुल अग्रवाल जी, हमारे साथ जीएस पन्नू साहब जुड़े हैं वर्चुअल माध्यम से। पन्नू साहब, बजट 2026 में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब तो नहीं बदले हैं, लेकिन कंप्लायंस और प्रोसेस को आसान करने की बात की गई है। क्या समझें कि बजट दरों से ज्यादा टैक्स सिस्टम में सुधार पर फोकस दिखता है या फिर कुछ और है? और साथ ही ये जो एक्ट है, ये लिटिगेशन कम करेगा या फिर कानून की भाषा ही बदलेगी? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस फोरम। एक चीज मैं आपसे शुरू में, आई विल जस्ट मेक एन ओपनिंग रिमार्क बिफोर आई कम टू द स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपने दिए हैं। यू सी, ओवरऑल बजट और जो बैकग्राउंड था, जिस बैकग्राउंड में बजट प्रेजेंट किया आज फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो वो बहुत ही क्रेडिटेबल है इन द सेंस कि 2 चीजें बड़ी साफ नजर आई। एक तो कंसिडरिंग द बैकग्राउंड, इंटेंट क्या होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की, वो क्लियर है। सेकेंडली, जो डायरेक्शंस हैं वो क्लियर है। नाउ द थर्ड थिंग इज कि एक्चुअल स्ट्रेटजीज क्या अडॉप्ट की गई हैं, कैसे डिप्लॉय की गई हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को कहाँ फोकस किया गया है, वो एरियाज अगर आप देखें तो बहुत ही सुकून मिलता है, इन द सेंस दैट इट शोज दैट वी हैव अ गवर्नमेंट व्हिच इज विजिलेंट एंड इज अवेयर ऑफ द स्ट्रेटजीज एंड द वे फॉरवर्ड व्हिच इज टू बी कैरिड आउट। ऑफ कोर्स वी हैव द प्लान फॉर विकसित भारत तो 2047, तो उसके संदर्भ में दिया जा रहा है। But coming back to your specific question on direct taxes, yes, there is no change in the tax rates for the taxpayers, either individual or the corporates or the non-individuals, other categories also. Yes, the opportunity has been used to do some fine tuning and also clear out some procedures. I would not say that everything has been done and everything cannot be done in a single shot. So therefore it's a welcome measure. जो भी किया है, TDS provisions को थोड़ा rationalize किया गया है. Then TCS also, जहाँ थोड़ा sore points थे when TCS collection at the time of education payment of education under the liberalized foreign exchange remittance scheme में, overseas packages में. So those are things which is facilitating. Plus taxpayers where there could be a default on their part of and they're requiring to file revised returns, there has been a simplified version on that too. Updated returns अगर किसी को file करनी है to correct some mistakes, there also some liberalization has been shown. Of course there are some fine tune जो हमने देखा है, speech में covered नहीं था FM के,
2-4-5 ऐसी लीगल कंट्रोवर्सीज चल रही थी टैक्स फील्ड में। जी जी। One relating to some tax limitation, period limitations on making of assessments, उसको एड्रेस किया गया है by way of making retrospective amendments. I will not go into the rights or wrongs of that amendment, but the fact is at least litigation की एक certainty की और एक उस तरफ बढ़ने की बात हो रही है। बिल्कुल पन्नू साहब, हम आपके तरफ फिर आएंगे एक बार, और हमारे साथ संजय शरण हैं, आप पूर्व जीएसटी कमिश्नर हैं। और इस सारी चर्चा को जो पन्नू साहब कहने की कोशिश कर रहे थे, इसको हम थोड़ा सा और अगर एलुब्रेट करने की कोशिश करें, टैक्स को सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। आप जीएसटी कमिश्नर रहे हैं, और आप ये भी देखते हैं कि उसमें कितने सारे अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई। जहां भी कहीं पर कोई कमी लगी, वहीं पर रेगुलेशंस को चेंज करने की कोशिश हुई। और ये कहा जाता है कि जो आज इतिहास में जितने भी कानून आज तक बने हैं, उनमें जीएसटी एक ऐसा कानून है जिसमें सबसे ज्यादा रिफॉर्म हुए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि जीएसटी में सबसे ज़्यादा रिफॉर्म है। जब जीएसटी गवर्नमेंट ले आई तो गवर्नमेंट उसमें 33 और मेरे ख्याल से 7 या 17 40 है, मेरे ख्याल से 40 टैक्सेज एंड सेसेज, इन सबों को 30 या 40 टैक्सेज या सेसेज को सबस्यूम किया गया और जीएसटी को लाया गया। और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, जैसे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले नहीं मिलता था, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स था, इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर आपके जो ट्रक्स या लॉरीज जो गुड्स को कैरी करती क्रॉस करती थी, वहाँ रुकती थी, बॉर्डर्स को एबॉलिश कर दिया गया। और वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट किया गया। एक ई वे बिल पकड़िए और चले जाइए देश में। ई वे बिल पकड़िए, ई वे बिल लीजिए, जनरेट कीजिए और साथ में इनवॉइस जनरेट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ई वे बिल, अगर आप जैसे आपने ई वे बिल की बात की, तो अगर ई वे बिल आप एक स्टेट में अगर एक बार उसको चेक कर लिया। फ्रेंड्स, फर्स्ट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर विल मेक हर ओपनिंग रिमार्क्स, thereafter we will take some questions. Please remember, identify yourself and your organization's name, and I would request you to ask one question only so that your friends can be accommodated. Thank you very much. Over to Honorable Finance Minister. Good afternoon. This is the customary press conference that we hold with all the secretaries. You've heard the entire budget being presented in the Parliament. So as opening remarks, I'll just highlight some of the points which we want to draw your attention to. But subsequently, of course, we'll answer all your questions. All the secretaries are here with me. So this budget being the first one, as the Honorable Prime Minister said 2 days ago, this being the first one for the second quarter of this century, also leading towards Vikasit Bharat 2047. We are laying the path and giving a push to the economy to maintain the growth momentum. And for that growth momentum or sustained economic growth, which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out. We are continuing to do the reform activities, so it will continue with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. Also, technology, 21st century, this century is completely driven by technology. So we will ensure that technology is brought in to benefit the common man, to make sure common man benefits in the sense of ease of doing living, or for his business to prosper, or for farmers for greater productivity, or better logistics, whatever. So technology for benefiting every common man. And above all, with all this, inclusive development. Sabka Saath, Sabka Vikas, and that is why you heard me bringing in schemes which have good allocations for bringing better health facilities, creating a cadre of people, not cadre in that sense, but a bulk of people who can come in as health workers. Also making sure we are able to provide dignified opportunities for Divyangjan.
Mental health has also received a lot of attention. So these are the side for Vikasit Bharat and making sure Sabka Vikas hoega. But the idea is the advantage and the momentum that we gained since after COVID by increasing public capital expenditure will continue. We've announced that 12.2 lakh crores are coming through public expenditure this time. It is 4.4% of the GDP. I'd like you all to please notice that, which is the highest, at least in the last 10 years. It could even be highest if you were to take data earlier. No increment in capital expenditure, sustained fashion has happened ever before. This one marking 4.4% of the GDP. Then what are the kind of things which will happen through it? You will have dedicated freight corridors. I've named Dankuni in the east, Surat in the west. Then I've also highlighted that 20 new national waterways, not national highways, national waterways are being planned. And again there, those are going to pass through some of the critical mineral areas. Orissa, where the mineral-rich state, you have the waterways taking it to the port, and the two ports have been identified, Paradip and Dhamra. Similarly, we are also making sure that the coastal cargo movements will be enabled through a cargo route, so that through the coastal area we are able to cut down on cost of movement of goods. City economic regions, developing them is a very big new measure that we are coming up with. And for that, an allocation of 5,000 crore per city economic region. Imagine the amount, 5,000 crores in 5 years, 1,000 crore per year per city is being given, and the emphasis is going to be largely on tier 2, tier 3 cities. And then talking of infrastructure further, with the capital expenditure coming with the big number, you're having also the high-speed rail corridors, 7 of them announced, and the destinations are clear, so that they become the bridge for all these economical robust centers. So those are for making sure that the infrastructure and the capital expenditure are getting tied up, and the country benefits from the ripple effects that these can bring in. The 7 strategic and frontier sectors in which we've highlighted that will increase productivity and also have new investments come in and give emphasis for India's own brand on those things is on the biopharma sector. I think that's going to be a big change in the way in which we are looking at giving capacity for those who are able to research, who are able to undertake research and development. So 10,000 crore initiative again over 5 years for domestic biologics and biosimilar production. This is a clear message and backed with enough substance that India's lead in the pharmaceutical sector should be kept intact, but at the same time bring in newer ways of helping the pharma sector, and also because it has an impact on human health. Semiconductor mission had 2 major announcements that will improve the India stack and also the IP related matters. Electronic components manufacturing scheme for 40,000 crores is a major encouragement for electronics to become self-sufficient. We have also announced establishing rare earth corridors so that India can face and be able to meet its own requirements with its materials. So once we identify and are able to explore these minerals and process them, make them available for us, our dependency on external sources for bringing in the rare earths will be lesser, and we've identified the states where we want to establish this rare earth corridors. They are going to be in Orissa, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So these are very important developments, and they are going to have multiple decadal impact on the Indian economy. Our dependence on magnets and rare earths will be brought down. 3 dedicated chemical parks, again for reducing our import dependence. High-tech tool rooms for research.
That will be set up in 2 locations. Very important thing is about the construction equipment being imported. That could be for building tunnels or metros or high energy and also heavy duty equipments which we are relying on imports. We want to manufacture them in India, and that is why I said, how does it affect a common man? It affects because firefighters today have novel, new, big ticket and small, very small firefighting tools and weapons or equipments. We don't have them in this country. That's why if there is a fire accident in some very congested area, our equipments are not able to reach those points. Whereas there are equipments which today are produced abroad, which can navigate those small corridors and go save people's lives. Whether they or huge ones, all of which we want to make sure that we will have production in this country itself, whether they are tunnel boring or anything else. From small to big, we want to bring in those very impactful infrastructure into India. So we'll support domestic manufacturing. Then container manufacturing is another which we'll support. I think I've gone in detail talking about the textile support in various forms. One very important announcement was made, Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative, which will make sure khadi, handloom, handicrafts will all be brought in, and one district, one product will all be brought in this initiative, and we'll be able to support rural artisans, rural workers and handloom weavers in those areas. Legacy industrial corridors have got saturated. Manufacturing happening there is now very constricted because they are not able to bring in newer robotics and others. So we want to upgrade these legacy industrial clusters so that they become cost competitive and efficiency comes into these places. Even more important is the champion MSMEs, small and medium industries, entrepreneurs, MSMEs, who are going to be given all the support, and 3-pronged approach is being taken up there. We are giving equity support, we are giving also liquidity support, above all professional support for them, so that MSMEs, the equity support is supported by a 10,000 crore SME fund, growth fund. Above all, we are also topping up the Self-Reliant India fund with 2,000 crores. So MSMEs should not feel any dearth of resources for equity. Similarly, they shouldn't feel any difficulty for liquidity in their hands, because the TREADS platform will now be treated almost as a backed up, security backed up instrument with which they'll be able to discount and get their monies. For professional support, we're working with the chartered accountant and cost accountant institutes so that they can create corporate mitras who can help these MSMEs in filing their returns, doing their accounts and so on. Above all, for youth and training, there's so much. You've heard this speech, so I won't want to take your time on it. High-powered education to employment enterprise, standing committees being formed so that they can recommend measures for service sector as a core driver of Vikasit Bharat. Part B concentrated a lot on tax and related concessions that are being offered. More importantly is the process simplification which has been announced. So elaborate measures have been taken. You will be able to also seek clarification if you want. New export opportunities for fishermen who can go into the economic India's zones, high seas, and also assess and access the global markets. The one very touching, and I really was moved by this proposal, is where we have identified 17 drugs or medicines which are going to be basic custom duty exempt, which are important for cancer patients. Similarly, 7 more rare diseases are added to the import exemption list of the import duties. Baggage clearance and personal
items which you bring in when you travel are all being given enhanced duty-free elements. Besides that, there are quite a few direct tax and indirect tax proposals. Decriminalizing the penalty proceedings and support to the IT sector are some of the high points. As an opening remark, I'll conclude here. I'm sure you'll be able to ask questions and seek clarification. Thank you for coming. Thank you, ma'am. I'll start this question, taking the questions. First question is 17. Good afternoon, ma'am. Shishir here from Hindu Business Line. Ma'am, my question is that under the miscellaneous capital receipt, the provision is 80,000 crore rupees. And last year, the provision was 47,000 crore, which has been reduced to 37,000 crore rupees now. Does this mean that there will be more equity monetization this year, or there will be more focus on the asset monetization of CPSEs? So you've got it rightly. The intent is that we will have a very strong asset monetization plan in place. Last year, ma'am had announced in the budget that there will be a pipeline prepared, which is being done. So we hope to reap the dividends from that. 238. Ma'am, Timsi Jaipuria, this side from CNBC TV 18. I just wanted to know the rationale behind the hike in STT in futures and options. So, first of all, I believe some confusion. In fact, the question that you have asked rightly reflects the announcement itself, that the only change made in STT is in the future and options. All the other STT rates remain the same. The primary objective of raising the tax rates on STT has been that it is felt that when you look at the volume of transactions in futures and options, whether you compare it to the size of GDP or size of the underlying securities market, it is largely in the realm of heavy speculation, which results in losses to small, retail, unsophisticated investors. And the government's intention is to discourage speculative tendencies, and the increase in rate is essentially in that direction. So it is meant to essentially handle the systemic risk in derivative markets. Even after this increase, however, the rates of STT will remain modest compared to the volume of the transactions that is happening there. This is the reason. 54. मैम तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। मैम आपने पूरा बजट जो है वो न्यू एमर्जिंग सेक्टर पे बड़ा फोकस रखा है। मैम मेरा सवाल आपसे दो हैं, यदि आप अलाउ करें। एक, मैम आपने जो एक्साइज ड्यूटी का कैलकुलेशन किया है वो पिछले बजट एस्टिमेट से इस बजट एस्टिमेट में तकरीबन 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरा, मैम जो आपने एमएसएमई के लिए कहा कि जो ट्रांजैक्शंस होंगे उसके लिए आप एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज करना होगा, तो क्या मैम ये सीपीएसईज के लिए कंपलसरी होगा जो डिस्काउंट ट्रेडिंग की जो बात है? थैंक यू। I'll take the second question, ma'am. So, हाँ, ये CPSEs के लिए मैंडेटरी होगा कि डिस्काउंटिंग एज वेल एज नॉन डिस्काउंटेड बिल्स दोनों को ही ट्रेड्स पे करना होगा, ताकि वो 45 दिन में भुगतान MSME को कर पाए। और ये हर तरह से चेक कर लिया गया है कि ये हो सकता है। So, we want to make CPSEs as pioneers. We hope, like ma'am has said in her speech also, that other corporates will also follow. On excise? Increased by 22%, sir, from last year B to this year. Because there is from 1st of February, all the tobacco products have come back into excise, and all those revenues will account for the increase of the next year. 209. Ma'am, Prakash Predashi from ET Now. The budget has announced restructuring of PFC and REC. What will this
restructuring look like? And does this also mean that these NBFC will be merged going forward? What is the later part of your question? That these NBFCs are not going to? Merged going forward? Yeah, I've said we are rationalizing it. You'll get to know as we go forward. We want to streamline it, and therefore we'll be taking some steps. We'll let you know the moment we decide how to go about it. 234. Hello ma'am, Harsh Kumar from Business Standard. Ma'am, two questions. One is, you said that a high level committee will be formed on the banking reforms in order to 2047. Are we going further for any kind of merger or something, since government is continuously saying that we need at least two of the big banks, in at least of the top 20 banks. So are we going towards that? No, first of all, when I say that it's going to be a high-level committee which is going to look into it, the terms of reference will be prepared, and we are looking at committee to go into the entire expanse of the banking sector so that they come up with recommendations which help us to plan for banking for 2047. We need, by the time we become a Vikasit Bharat, 2047 is our goal. We need to understand what are the other steps that we need to take in the banking area, and based on the recommendations we'll go forward. But we have the Secretary Department of Financial Services. We'll ask him to also give us, please. Ma'am, I think you have rightly responded. There are large number of aspects relating to the banking requirement. For example, the credit to the GDP, commercial credit to the GDP ratio low, and the expansion of the banking network, and what kind of procedures currently we have that is impeding both the deposits as well as credit. All those aspects will be looked at by an expert panel, a committee, and we'll definitely have TUR, and then also consult the all the stakeholders, and the government will take a view on how to lay strong foundation for 2047 Viksit Bharat. Ma'am, one more question. 229. Left side, yes. Ma'am, Premangshu from Ananda Bazar Patrika. Ma'am, have you consciously avoided announcing any bonanza for the poll-bound states? And secondly, can you elaborate on this East Coast corridor, industrial corridor you announced? See, the industrial corridors are very critical for supply chains. We need a predictable mineral, rare earth and magnet related products to be made available for India's manufacturing. Whether it's lithium ion, whether it's automobile sector, whether it's the new age solar, you need these rare earths to be processed and be made available. We have enough raw materials. The coastal areas are rich in these minerals, and therefore states also felt, I must credit that the interaction that I had with the finance ministers pre-budget, many states felt that there are rare earths which they can utilize. We then sat up in the budget group that we have, Revenue Secretary, DFL, Secretary DA, and thrashed out, talking with the states. What are the kind of things that we can do so that their capacities to extract these minerals, process them, make them something which the industry can benefit from. So India can be less dependent on imports of these materials. That is where, having spoken to states, we thought it's very important to recognize the corridor and give a policy for it so that industries can invest, private sector can come in, governments, state and center can come together on it. That is where these corridors were announced. And looking at the success of the defense corridor, I can confidently say these rare earth corridors will make that big a difference to the Indian economy. The first question, I think there's enough to cover all the election states. If I do, you will ask me, why have you done it only for the election states? Now I've done it for election and non-election states as well. You want me to spell out what has been done only for the election states? I'm quite happy to do it. 262, front.
At the front, please. Here. Front side. Front row. Good afternoon, ma'am. Sapna Das here from CNBC TV 18. Two quick questions. Just wanted to understand the gross borrowing at over 17 lakh odd crore. Would the government look at it as being on the higher side? Just asking that. And within that also, if you look at your net tax revenue stream, of course, B to RE it's higher, and a lot of concessions have been given away both on direct and indirect taxes. But the trend seems to be a bit flat, around 28 lakh odd crore. So if you could explain to us, how is this entire thing looking? And second, ma'am, in terms of the disinvestment aim, 80 odd thousand crores, would this also include IDBI stake sale sometime in FY27, ma'am? Thank you very much. So you've covered a number of secretaries all at one go. So on the borrowings, no, we don't think it's on the higher side because the net market borrowings are in the range of 11.73, which is been plus around that number for the last couple of years. The larger number is because we have 5.5 lakh crores which have to be repaid this year. So to that extent, we don't think that it's a large number. We have a plan how to manage this, and according to that plan, which also gets released from time to time, the markets would also know, as well as all of you all. 4. Okay. So, on the tax stream, because of some concessions that were given this year, there has been some course correction. But if you look at the next year, the direct tax is growing at 11.4% and continues to be 3.1% of the GDP. The total collection would be 6.9%. The indirect tax excise is growing very healthily because of the base correction, the base which has got added. Customs too is showing a decent buoyancy. So on the tax revenue, I think we are looking up. And even GST, as you would have seen the collection figures today, after rate rationalization, the buoyancy which we had expected, and in this hall we had discussed about it, you can see that coming back on that tax. Hi, ma'am. Meghna Mittal from Money Control. The fiscal deficit target that you have set for next year from 4.4 to 4.3 is being seen as very, very gradual. Is there a specific reason, or is it because of the global uncertainties as one of the major factors for being such a gradual fiscal consolidation path? I would have thought you'll appreciate it being gradual. Because particularly fiscal, drastic changes don't go down well. One or the other section gets hurt. We will have to be gradual, but yet keep it well within that band which gives confidence. And to show that we care for fiscal prudent management. There's no point in me dropping it to, let's say, 4. It has to be steady so that the economy goes in a steady speed. So it is a responsible number and realistic number. It's not as if I wanted it to be so gradual. It is a responsible number. We should achieve it and equally not bring in any kind of turbulence anywhere. Thank you. From the center flank, 190. Thank you and congratulations on a very comprehensive budget. Before you start, I was going to look at PIB and say this side is being ignored. Yes. But good that he called you. Thank Come. you. I'm Aprajita Saxena from CNBC International in Singapore. I'm very curious because you started talking about tech, and I want to ask a question about the ISM 2.0. There are those on the outside who say that India sort of lags when it comes to AI innovation, especially innate innovative LLMs. Is the strategy of ISM 2.0 to sort of become part of the global value chain, or are you more positioning towards India creating its own native LLMs? Thank you. I think Kashmini Vaishnav, the minister, has been speaking extensively about this. There are several aspects of it. We want to be sure that in the semiconductor domain, we have every expertise for all those 5 major chip or modeling or, the infrastructure, design, every aspect of it. So he is talking about creating capacities within the country
to be able to have that kind of a infrastructure well laid out within the country. And similarly, if you're looking at the way in which our startups are working, using AI, and very clearly we have also shown a path that it is not just the large language models, but also smaller ones, medium-sized ones, which can serve the requirement of your economy. So AI in India, particularly when you have a huge demographic dividend, will have to give us results to ensure that our people have work and also the opportunities are going to be enticing enough for the youth. It cannot replace human efforts. So we are at the same time redefining for ourselves, if I may use that expression, on how to use AI, what is the capacity that we have to create, the kind of infrastructure that we have to lay in the ground for it. Equally, the products which come out of it will have to benefit our people, because our youth are revving to do more and new. For them to do something new and for them to do something more, we have to create benefits out of AI rather than push along with AI unthinkingly that it doesn't serve our people. So I think these many different factors play in making a decision on semiconductor. And that is where semiconductor ISM 2.0 looks into these aspects as well. And I'll ask the CEA to speak a bit on it, because he spent a lot of time so that he could write effectively capturing what's happening down. Ananta, you want to say anything on it? Actually, we have to see the semiconductor mission and the announcements related to the rare earth corridor, which ma'am talked about a few minutes ago. All of them as part of the framework that we presented a couple of days ago here on the strategic resilience part. So, in fact, many elements of this ma'am's budget speech focus both on equipping us to handle the AI-related technology as well as skilling the population in areas where they can be immune to some of the AI-related impacts as well. So it covers both dimensions, and therefore the semiconductor mission, the rare earth corridor, and also some of the Part B announcements ma'am made about the various electronics and manufacturing sectors were all part of the initiatives to make sure that we make ourselves strategically resilient in a very fraught global environment. 138 at the back side. Yeah. I'm Rishabh with NDTV Profit. Just wanted to ask on the buyback tax, the rationale behind it, because was it essential to do it now? Because in 2025 there were a lot of companies that came out with significant share buybacks. Also because, and also do you foresee some sort of a reduction in buybacks? And secondly, on pollution related schemes, the outlay has been very stagnant, but pollution as a problem remains. Is this not a policy priority for the government now? On the buyback, I'll have Revenue Secretary brief us. So first of all, on the buyback, I'd like to clarify. I hope that the point was clear enough in the speech also, that it is in fact a relief. It's not a tax, additional tax. It is a relief. Buyback tax system was changed to make it as a dividend income, which is income at the applicable income tax rate at the hand of the shareholder. It has been corrected now, and we have put the tax to be in the hands of shareholder as a capital gains tax, which long term, for example, will be only 12.5%. So there is a correction and a relief which has been given to the shareholders. All that has been done is, the whole objective of doing that change at that time was misuse of a tax arbitrage by promoters. So the change made for promoter is that additional buyback tax on them, which again keeps things status quo for them. So even today, the marginal rate at which they would have been paying the tax as a dividend, which is at their respective income tax rates, we have kept it at 30 and 22. If it is a corporate, 22. If it is an individual, 30. So as far as promoters is concerned, it is status quo. As far as the other shareholders concerned, it is actually a very big relief. So that is probably what may make the point a little clearer, the announcement itself clearer. 76 at the front side. Pollution.
So pollution is a priority with government, and not everything has to appear at the budget speech is how I would put it, ma'am. So we are working with many state governments on projects related to air pollution, even water pollution. There is a significant budgetary outlay on sewage control as well as drainage. And as it was noted, you would have seen the Finance Commission recommendations also. A large portion of the Finance Commission grants to the local bodies, urban and rural, is tied to water and sanitation, particularly I would say sanitation. So pollution of all kinds remains a top priority, and there are different ways in which we are trying to tackle it. Hello ma'am. Ma'am, I am Monica from Business Standard. Ma'am, I have two questions. Ma'am, I am here. Ma'am, I have two questions with regard to customs. Ma'am, in your budget speech, you said that honest taxpayers will be able to close their case and they can pay the additional amount in view of penalty. So I want to know whether this is a customs amnesty scheme, and if you can just provide the contours of this scheme. And also, ma'am, Economic Survey flagged the need for convergence between transfer pricing, which comes under income tax law, and customs valuation. But there was no mention in your budget speech. So is there any such proposal being considered by the government? Both on the direct tax and the indirect tax, this is not an amnesty scheme. This is essentially an offer given to the honest taxpayer who would otherwise, when he gets to know that he has to pay the duty, he will like to pay it. But because our laws require him to also pay a penalty on that, the negative connotation associated with being penalized, which he has to obviously disclose at some point of time, does create a situation for him or an incentive for him to rather dispute the duty, even though he may not want to do it. So the window that we are giving to the taxpayer is that you will, if you are willing to pay your tax or whatever is the duty, instead of penalty, that same amount you can pay in the form of an additional amount. So it will not be either a relief or an amnesty. At the same time, this amount that you pay will not be treated as a amount which you have paid as a penalty, and therefore that negative connotation will go away. You may have seen that there is another announcement of a similar nature on the income tax side, where when it comes to the cases of under-reporting today, there is a provision under which you have to pay tax, interest on tax, and a 50% penalty. If you are willing to accept the demand and not go on appeal, you need not pay the penalty of 50%. You can go ahead and pay your tax and interest, and the matter is closed. What we have done is expanded this window and included even misreporting cases, where penalty is otherwise 200%. But there again we are telling him that you can settle it by paying the tax, the interest on tax, and this 200% get reduced by half. You pay 100% as an additional income tax. The idea here is that if you are an honest taxpayer, accept the fact that you have to pay the duty. We will not like to brand you by using the word like penalty. That is these two windows are essentially meant to take care of those situations, which is why reference to an honest taxpayer. Yeah, we are examining that separately. 194, left side, yes, back. Ma'am, this is Amitod Singh from CNBC International. Congratulations to you and your entire team. I have two questions. The first is around foreign investors. There were a number of expectations that, taxation structures would be changed, particularly when you think about things like withholding tax. So what we want to understand is whether that was even discussed within the government. And my second question is 15% defense spend increase. How much of that has to do with global uncertainty? Revenue Secretary can answer on the first question. See, global uncertainty is something which definitely occupies all the officials' mind when we are preparing for the budget. But I won't attribute it to be the cause for any one step. Across the board, we kept that in mind. So it's not the cause for any one thing that we've done or one thing which we did not do. That's kept in our mind. Our macroeconomic fundamentals are strong. You heard the CEA speak that despite you having a macro sound economic foundation,
you're still sort of facing a world which is uncertain. And therefore, when currency, Indian rupee versus the dollar becomes an issue, you have done everything within the country to make sure your fundamentals are fine. But uncertainty globally is affecting on many grounds, and we are seized of it for everything that we do, not for one particular thing, but ours. Yeah, I think today we need to look at what has been announced in the budget. So we would rather focus on that, because there would obviously be many of the issues which would be discussed and deliberated. But what has come out for you before in the budget is what is there, and we should probably focus on that. And if you saw that there are many announcements, especially which are addressing the needs for attracting investment in India, bringing more certainty, both for the residents who interact with their related parties as well as for the non-residents who otherwise do business here. There's a whole host of those announcements. You would appreciate that what, for example, has been done in IT services is a change which is completely, and it's a fully comprehensive change, which practically will take care of just about 30 companies need to now sign APAs. The rest, all 11,000 odd, will be covered under one or the other system of certainty of taxation, either through safe harbor rules or through the APA agreements. So this has been a major change. In specific sectors where we felt that the residents needed certainty, we have provided that, whether it is in the data center, whether it is in manufacturing, electronics, even for the expats, if they are going to stay here, the experts, for a longer time. On the data center, I just thought I'll take this opportunity to clarify, because there was some speculation about what has been done. The thought process in this is that a global entity which is providing kind of cloud-based data services uses data centers all over the world to provide services to the customers. So it is very difficult to connect one-on-one as to which data center has resulted in what type of revenue. So the international entity of this nature would like to set up data services centers in India, which is a net economic plus for us, because it adds to that scale and level of economic activities. It has strategic purpose too. So the arrangement we have done is, just because that entity will set up data service centers and will use this as one of the many to provide services globally, should not become a cause of uncertainty for it that its global income will get taxed here. So that is the certainty which we are giving to it. Quite naturally, the data service center which is located in India will be taxed depending on the way it is positioned, and that entity will be selling its services to customers in India through a reseller entity, which again gets taxed. What we are excluding from taxation is this global entity, which is essentially doing cloud-based services, using data services centers across, and we do not want it to be deterred from enhancing its business footprint in India to provide such global services. I'll just come in to add to that point on foreign investors, to point out one or two points on the Part A side also, which are important. One is that this was this ask from AIFs for a very long time, that most AIFs in our country are formed as trusts. Their request had been for a pretty long time to consider if the LLP Act can be modified and amended to align it with the functional requirements of AIFs. So that has been announced today, which is a very big sort of move forward, as it will allow them to, the amendments are going to be of such a nature that by becoming LLPs, first of all, the liability will get limited. And then there are going to be amendments which will also allow for document filing rationalized for entry and exit of partners, and similar such things to make it easy for the AIF partners. So that's one of the announcements today. The other was the announcement on the PROIs and the relaxations given therein of how much they can invest in a company individually and together. So those limits have been significantly enhanced, and all of it has been rationalized in line with OCIs and NRIs. Other than that, the FEM NDI rules, we intend to review it for two things. One is, again, we are continuously in touch with investors. There are asks over there. So instead of doing it one by one, this shows the intent of the government to actually reach out and address the world which is interested in investing in India and make it easy for them to do so. 214. मैम, मैं आलोक प्रियदर्शी हूँ CNBC आवाज से। मैम, मेरा सवाल यही है कि जो सवाल STT से रिलेटेड है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से, मैम यहाँ पे
मैम जो पॉलिसी है फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर सरकार की क्या पॉलिसी है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। और दूसरा कि जो एसटीटी बढ़ाया गया है, बहुत ही जैसे रेवेन्यू सर ने कहा कि बहुत मामूली बढ़ोतरी की गई है, तो क्या इससे जो सरकार की पॉलिसी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे जो बहुत हाई रिस्क की इंस्ट्रूमेंट है उनमें निवेश से एक तरह से कॉशन करने की पॉलिसी है, तो क्या इससे ये मकसद हासिल होता है क्या? I'll ask the Revenue Secretary to go into the details, but आपका विषय जो मकसद के ऊपर बात कर रहे हैं ना, मैं पिछले बजट के समय में भी इसका एक्सप्लेन भी की। We are touching only the futures and options. STT otherwise बाकी सब का ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई नहीं किया, मगर जहां स्पेकुलेशन, हिंदी में सट्टा बोलते हैं, स्पेकुलेशन ज्यादा और समटाइम्स हाईली रिस्की, क्योंकि हमें मैसेज आता है लोगों से कि इधर बहुत लॉस भी फेस कर रहे हैं लोग जिनके हाथ में इतना एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है जिससे वो स्पेकुलेट कर सकते हैं। सो दिस नॉमिनल इंक्रीज इज प्योरली एम्ड एट हाई स्पेकुलेशन ओनली टू डिटर देम। मकसद बोल रहे हैं, हाँ, उनको थोड़ा डिस्करेज करने के लिए। हम इसके खिलाफ नहीं है, जरूर एक्टिविटी जो होता है उसका रेस्पेक्ट करते हैं, मगर इतने लॉस और इतने छोटे छोटे लोग का लॉस को सरकार देखकर कैसे आप चुप रह सकते हो? डिटर करो थोड़ा उसको पीछे हटने के लिए, बस उतना ही। So the tax is only one element of kind of supplementing or supporting that policy, which is what I explained before. In as far as the rest of what and how this market has to be regulated is probably for the market regulator to respond better on that aspect of it. 67 from the center. So I'm Pallavi from CNN News 18. Little political question because the reactions are coming in from the opposition parties. Rahul Gandhi specifically says that the budget has failed to go in for a course correction and that it did not address the real concerns of the country. With due respects, I don't know what course correction he is referring to. Economy and its fundamentals are strong. Global uncertainty is facing many of our sectors for whom we have brought in so many different schemes for those small and medium enterprises, for textiles, for leather, for shoe uppers, for people who are working in the rural areas, schemes for benefiting them, for even the farmer and value addition, for women entrepreneurs who are chote groups, self-help entrepreneurs, the she marts that we've come up with. These are ways in which we are reaching out to the common small people to make sure that they don't have to face big changes in their life because of any volatility coming from outside. They could be contributing to exporting small things. But different uncertainties can affect them equally. Many of them have been shown as successful because you see when you go there, Lakpati Didis is a fantastic difference made to women in the rural areas. Now we are bringing them together to sell their wares. Are these not measures through which we are reaching out for the poor, the small, those in a difficult terrain or in rural areas? And with all this, the fundamentals of the economy remain strong, and that has come out even in the economic survey. So, well, politically you want to criticize, you're welcome, please do it. But if you want to give me the facts on which you're basing your argument, I'm willing to hear and willing to reply to that. 16 at the center, yeah, on left side. Ma'am, I am Bani Kinkar Patnaik from the Economic Times. Ma'am, I think probably one of the most important features of this budget is that for the first time in probably many years, your effective capital expenditure at 4.4% of GDP is going to be slightly higher than your fiscal deficit, projected fiscal deficit for the next year. So it means, I mean, in other words, you will be using more than your entire borrowed resources. You will be deploying that in productive spending. So I wanted to ask you that, whether it is going to be the new normal in the coming years.
And ma'am, one clarification I needed. This VVGRAMG scheme, you have allocated more than 95,000 crore. At the same time, I see that, Narega has also got 30,000 crore. So is it going to be on top of that, or because GRAMG scheme is supposed to replace this Narega scheme? I'll ask the Expenditure Secretary to respond on that. Yeah, on the new scheme, the GRAMG, the budget provision has been provided exactly as what you would have seen when the bill was being presented and the act was there. So we have gone exactly whatever is required has been provided. Now on the old scheme also having some money, in fact, it's a legacy of the inefficient way in which the scheme was, the MG and Narega was being implemented by the states. So there is some carryover of liabilities, 30,000 crores. So that we have taken the responsibility of verifying and fulfilling it. So that's why we have kept that, but otherwise fresh implementation will be on the new provisions. I would say that the fact that we have an annual budget means that we review everything annually. So I will leave it at that. We have done our fiscal math, and I think we come with a certain credibility on the fisc that we are confident of meeting, and while adhering to our commitment to higher capex. And fiscal deficit financing, as we have always done, is through a mix of market borrowings as well as NSSF. So that will continue. So there's not many major changes like that. Thank you. 37 at the back, yeah. Hi ma'am, this is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. Just wanted to understand that this one-time foreign asset disclosure scheme, how that will be different from the similar scheme in the past, and if you could elaborate a contour of that, and also is there any estimation of undisclosed foreign assets being done by the department? So this scheme is meant, first of all, for small taxpayers. There is a ceiling of the amount that can be disclosed. This window was provided for the first 3 months when the act was brought in, the BMA Act, and that time people utilized it. What has been found is that there are many small taxpayers who, because of their ignorance, etc., have not been able to do proper disclosures. So this window is being given as a one-time 6-month window for such small taxpayers, the list of which some idea of who they are has been given in the budget speech also. So there are two streams in this window. One is of the people who have paid their tax, the income is disclosed and is quite transparently known. All that they failed to do is they were not able to disclose the asset, foreign asset that they had because of that. Which means they will be able to prove that the income was put to tax. However, the asset was not, just only thing they did not do is did not disclose it in their returns to the income tax department. So this is the window B, where we are saying that if you have a foreign asset of up to 5 crores, you can pay a fine of 1 lakh rupees, which today under the Act would have entailed them a fine of 10 lakh, a penalty of 10 lakh rupees and prosecution. So you will get both immunity from penalty and prosecution, and you can declare those assets. This is category B. There would also be category of people who may not have been able to or have not properly disclosed their income. This is the category A, for which this limit is 1 crore rupees. So 1 crore rupees of foreign asset or income, if they have not disclosed, then they can disclose it during this window. In this case, however, they will have to pay the tax as well as 30% tax and then 30% additional tax on top of that, and a certain amount of interest. Again, they will get immunity from penalty and prosecution. The idea is to essentially help those NRIs, returning NRIs, students, some professionals, people who have gone out, people who may have got ESOPs, any kind of such assets that they may have outside. They'll be able to disclose it and be able to protect themselves against penalty and prosecution and come clean. And it has been structured in a manner that it addresses only small assets, and secondly, it is something which will be helping them to also, get away from all the procedural problems of penalty and prosecution. 25.
Hello, ma'am. Ruchika Chitravanshi from Business Standard. Ma'am, while you have stated that global uncertainty was playing on the minds of officials across the board, if I may ask you, what was the one challenge that you were trying to address, or economic concern that you were trying to address in this budget? We said global uncertainties play in the minds of all the officials. It is a truth that all of us are watching that global uncertainties are really of the magnitude that we've never seen before. So naturally, we had to assess for ourselves the various ways in which these uncertainties are playing out. So all of them are equally important. 243. Good afternoon, ma'am. Kriti Ambe from Informist Media. Ma'am, this year's nominal GDP projection, the projection of 393 lakh crore, does it take into account the upcoming base year revision, or is it possible that this number would undergo further revision when MOSPI releases the new base year and releases its estimates based on the new base year by the end of February? Let the CEA and Secretary EA answer that. The 393 lakh crores or 10% nominal GDP growth was arrived at based on the existing GDP base year and the methodology. Ma'am, if I could follow up on that, back in 2015 when the base year revision had happened, the previous year's 14 and 13 numbers went up, nominal number went up by odd 9 lakh crore. So if FY26 number goes up by that sort of magnitude, or even if not from 357 it goes to 360, your fiscal deficit estimate would come down even further. So do you think there is possibility? You began your question with the if, right? No answers from my side for ifs. Sure, thank you, ma'am. 45. I think center. Hello ma'am, this is Pushpita Dey from the New Indian Express. So a lot of custom duty reductions have been introduced. So how do you see the impact on the revenue, and also particularly for the consumer goods like 50% duty reduction, will there be any measures to ensure there is no dumping after the reduction happen? And also, not particularly related to the budget, after the recent Tiger Global Tax Supreme Court verdict, do you see there will be any impact on the foreign investment for India? Thank you. Customs duty, the reductions, etc., which have been given have a logic for that sector, the need for those items to be brought into India, and customs duty not to add cost to it. So there is an economic logic of why it has been done. And if you have seen, most of them are meant to essentially enhance either manufacturing or value addition within India, or help the cause of exporters who are using those imported items to export items from out of India. So this is a very conscious sectoral call. For each sector item, the value chain has been analyzed, based upon which decision on whatever moderation or whatever calibration of duties were to be done have been done. The second part, in terms of revenues etc. is concerned, what you would have seen is there are a lot of custom process reforms that have been proposed. And the idea is essentially to enhance the volume of international trade, which should fetch us more revenues rather than playing on the rate itself. So we do hope that these process reforms will encourage more people to kind of, export, in the process probably the part of global value chain, more exports, and duty or revenues will be a result of that buoyancy. I just want to add one additional point to what my colleague Revenue Secretary said. If you look at many of the customs duty reliefs given in Part B, you have to read them in conjunction with the announcements made in Part A on manufacturing. So you look at electronic component manufacturing and you look at the concessions given in Part B, there is a certain logic, alignment and synergy between the two. So that's exactly what you need to focus on. So actually, the fear of dumping there, will you be monitoring it? We are looking at only those sectors where we need to have our production capabilities improved
and raw materials shouldn't be a constraint on those items which are necessary for us. So it is a very calibrated way in which we've done that. 39, the front row. Thank you, sir. Congratulations, ma'am, and everybody. Karishma from Business Today. Ma'am, I just want to also continue the question on the rural employment scheme. A couple of states have shared skepticism and apprehension if they'll be able to fiscally absorb it and if they have the appetite on the cost sharing for the scheme. Ma'am, second, just a follow-up question, if there could be an update given on IDBI disinvestment. I think the Agriculture Minister has spent a lot of time interacting with states to tell them what actually is Vikasit Bharat Gram, the G Ramji program is about. It is not about money. We have continuously given. That's why you heard Expenditure Secretary say, Manrega, balance which had to be carried forward, had to be provisioned for, we had to pay them back. Although inefficiently spent, we have to still give them, though we made the provision. And Vikasit Bharat Ji Ramji, as was at the time of the act getting passed, whatever was predicted was going to be provided, we provided for that. So I think there need not be any doubts in the minds of what is going to happen about rural employment guarantee scheme. In a way, the new scheme actually understands how efficiently it can function in the ground. Inefficiencies have been removed from it, and the money allocation proves that we have put the money where we spoke about. So that's fine. All disinvestments which have been approved by the cabinet earlier, that list will continue to be before us, and we will carry forward every such. And on specific, if you want to know, we have our DPAM Secretary. Please do tell. I think one thing we must keep in mind is that we follow a composite strategy, and disinvestment and closure have to be seen together as part of that composite strategy, which enhance or increase the participation and efficiency of the private sector. As part of that strategy, as Honorable FM said, whatever in principle approvals we have obtained for both disinvestment and closure, say about 50 of them, half of them have already been completed, which means about 12 closures and 13 strategic disinvestment transactions. The other ones are on track. That is why we keep aspirational targets, because we are fully on track and fully committed to completing each one of them and taking to a logical conclusion. Thank you. Yes. 81, backside. नमस्ते, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो मुझे याद है कि दीपावली के दिन मैंने पूछा था कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्या करेंगे, तो आज आपने पिटारा खोल दिया उसके लिए। आई एम वेरी हैप्पी। दूसरा सवाल मैम ये है मैम कि यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की आपने 5 बात की, क्योंकि डेवलप्ड इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि हमारे बैकबोन है ग्रोथ का भारत के लिए, उसके लिए इसमें क्या है? और दूसरा, अभी मैं एक शो करके आया हूं, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है? हायर एजुकेशन के लिए जब हम 5 यूनिवर्सिटी हब्स बनाने जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट आज प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज बहुत आ रहे हैं। स्टेट्स का मन लग रहा है कि और हायर एजुकेशन सेंटर्स जरूर होना चाहिए। इन सब को सुनने के बाद हम हायर एजुकेशन में और ऑप्शंस ले आ रहे हैं, जिससे हर तरह का कोर्स
उस हब्स में बने. Our students don't need to go out in case उनको वीजा नहीं मिला और बोरोइंग करके जाना है. उस क्वालिटी का एजुकेशन भारत में ही हो. इसीलिए जितने भी स्टेट्स वो क्या बोलते हैं चैलेंज मोड में आकर के बोलेंगे कि हम जमीन देने के लिए तैयार है. मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे बनाते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज विद different types of courses can all come and set up, and this will also mean partnering with universities abroad. So higher education में जो flexibility के साथ function करना है और हमारे students जो बाहर जा रहे हैं उनको उसी क्वालिटी के एजुकेशन इधर देने का, ये नहीं कह रही हूं मैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी नहीं है, मगर एस्पिरेशनल लोग को कुछ और सर्टिफिकेट जब चाहते हैं वो सर्टिफिकेट क्यों ना भारत में ही ना मिलना. Why don't we provide for it? And इसीलिए वो स्कीम ले आए. So it does not immediately mean that we are not going to be spending on primary and secondary. Primary and secondary में इतनी सारे states के साथ collaborate करते हुए PM श्री स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक बहुत सारे कदम पिछले 5 साल में उठाया गया. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद उन सबको अभी भी सपोर्ट मिलेगा सेंटर से. हम कम नहीं कर रहे हैं बजट को. 22, the front. Hello ma'am, good afternoon. This is Surbhi from Business Today. Ma'am, firstly I wanted to understand the impact of your tax proposals both on the direct and indirect tax side and as well as the net implication. Ma'am, secondly a very basic question in terms of your new fiscal anchor on central government debt reduction. What are the measures that will be followed on that? Thank you. So on the new fiscal anchor, we, like it has been announced, the glide path will be continued, and fiscal deficit, in other words, shall be the operational target to attain the debt to GDP. So it's not that we are going away from the fiscal deficit, it's not going to be the monitorable target, the target will be the debt to GDP that we are going to be monitoring, but both do work in tandem, and that is understandable. That's the way we are anchoring this. So I have already explained the growth rates for the tax the next year. So if you look at the buoyancy, for example, for direct tax, we are taking the buoyancy would be around 1.14. So which shows that we expect that with all these reforms, the tax growth should become and would be growing at a rate faster than that of the economy itself. So we do expect the tax income, the tax revenues to be sufficiently buoyant in the coming year. 46, this side, left. Ma'am, this is Priyansh from Money Control. I have two questions. One is on the GST. So the GST numbers that the target for FY27 is 2.5% lower than this year's target. So although there has been, this is due to the reduction in rates, but when can we expect the growth to be in the positive territory? And second question on the nominal GDP number, have you taken under consideration the conclusion of the trade deal with US on the nominal GDP? And if it is concluded, can it be higher? So the nominal GDP, as the CEA explained, has been calculated on an as-is where-is basis, which includes the US-India trade deal as-is where-is. When things change, we will see how the data shows up. 249. Achha. GST revenues, what is the question? Can you repeat the question? Over the last year. No. You will have to account the fact that compensation cess is not going to be there the next year. So you'll have to exclude that, which is why you would see our monthly figures are showing other than compensation cess. That is the right number to look at. Hello ma'am, this is Priyoshmita from Informist Media. Ma'am, since you mentioned that gross borrowing for FY27 is not particularly high,
can we expect more buybacks this year as well to bring down subsequent repayments? And secondly, are you looking to switch bonds with the RBI as well to manage your repayments? You did this this year in May after a gap of 2 years. Thank you. So the reason we do buybacks and switching is basically to reduce our repayment burden and to mitigate the bunching up effect, and also to manage the costs. So we did a significant switching of high coupon securities this year. Next year, this 5.5 lakh crore which needs to be repaid, as they keep coming up, we will be taking decisions closer to those, while work is continuously going on this in one division of DEA. 24. Mike, please. Yes, ma'am, this is Rajesh Singh from ANI. My question, could you clarify some measures in the budget to boost savings? Because there was some demand by bankers for FDs to be linked with like equity benefit, or NPS scheme were demanding some kind of tax benefit. Because we need greater savings for greater growth. We need greater savings for greater role, all right, and the banks know how to do it. 9. Please pass. Hi, this is Adrija from Money Control. I had 2 questions. One was on the fact that the economic survey had also raised some concerns about states' fiscal health and their borrowing, putting pressure on the sovereign borrowing rates also. I just wanted to understand, has the centre thought about how do we want to tackle this with the states, because we are targeting a debt to GDP ratio. But we know overall debt to GDP ratio is the anchor that most global agencies look at and, ideally needs to be looked at. Second, my question was on the FEMA rule changes. I just wanted to understand with the interaction with the investors or, the stakeholders. Globally, what are the kind of demands or what are the kind of requests that are coming in, especially amid the status when it comes to foreign investor outflows? So what are we looking at, if you've thought about anything yet? We're talking with states about their borrowing can only be done as a nudge conversation. Beyond that, the centre cannot do. Equally, if you look at it, the centre is also under Article 293(3), duty bound to make sure that the borrowings of the states are also monitored in a way. We can't curb them, but beyond their FRBM, we can sit with them and have a conversation. But that's about where it is, and I think largely states understand their duty under the FRBM Act. So I'll leave it there, you understand. But on this question, the next question, that NDA rules. So on the NDI rules, there is a whole bunch of suggestions that we've got, but it's not like a review has started and a serious public consultation in a structured way has started. So there have been, I don't remember from the top of my head, but some things on the definition of FDI itself, some investors have raised. And there are other such things, but when we like ma'am has announced today that a review will be taken place. So when we start the process formally, there will be formal interactions with investors and we'll take it forward. 237, the third row. Yeah. इसके बाद 2 लोग बचे हैं. Last 2 questions after this. I'm Nikunj Ohri from Reuters. Ma'am, I have 2 questions. One on your announcement on exempting foreign companies that provide capital assets or equipments to contract manufacturers. They have been given a 5-year exemption. So will that help the likes of Apple and Samsung that have been ramping up production in India but face some tax uncertainty? And second, on the tax holiday for data centers, would that be extended to existing companies that have existing foreign companies that have data centers? And lastly, there was a suggestion in economic survey. I want to ask you whether the government would look at implementing it on diluting government stake in listed public sector companies. It suggested that you amend the definition of a government company through Companies Act and then lower your stake. So will that be given a serious thought? Thank you. See, the contract manufacturing, that is the toll manufacturing exemption that has been given, essentially is for the companies which will give their capital goods
There'll be no transaction, there'll be no sale, no lease. It's just given because they have some reason to do it, business reason to do it, and it is utilized by the entity here to manufacture. So this will be in a bonded zone, customs bonded zone. Therefore, we are saying that if you bring your machine, and that machine is used by a local manufacturer to produce something, we will not consider this to be a PE connection to India, and we'll exempt you for 5 years. I mean, for 5 years, the possibility of it being PE because its machine is being used here is something we are giving him certainty by saying that we'll be exempting him for 5 years. तो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नमस्कार, बजट की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू और मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रीति सिंह। नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश कर दिया है। पहली बार रविवार को पेश होने वाला ये बजट कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। पीएम मोदी ने कहा ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म किए गए हैं वो आकांक्षा से भरे हुए भारत के साहसिक प्रतिभाशाली युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम अपने सहयोगी प्रीति के साथ। बिल्कुल, और अभी हमने देखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम जो संवाददाताओं ने सवाल पूछे उनका जवाब दिया और उन्होंने विकसित भारत के रोड मैप को किस तरह से ये बजट आगे बढ़ा रहा है इस पर विस्तार से हर सवाल का जवाब दिया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जो 140 करोड़ नागरिक हैं हमारे, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। युवा शक्ति से जुड़ा इसे बजट बताया था और कहा था कि हम फिस्कल डेफिसिट को कम करने और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जो कोशिश लगातार सरकार की रही है, वही कहीं ना कहीं इस बजट के जरिए भी आगे बढ़ी है। तो अलग अलग सेक्टर्स को लेकर तमाम घोषणाएं हैं। 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। मनोज कुमार उपाध्याय जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि डेप्यूटी एडवाइजर हैं एनर्जी नीति आयोग में। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया संसद टीवी में इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय शरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड जीएसटी हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुभाष चंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमडी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जीएस पन्नू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। जीएस पन्नू जी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरह से अगर मैं शुरुआत करूं और मनोज जी आप ही इससे पहले प्रतिक्रिया लूं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब आने वाला जो समय है वो एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा, मैं कहूं, खींचतान, लड़ाई और हर देश का एक कवायद रहेगी कि एनर्जी के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हैं और वही बाकी सारी चीजों की एक तरह से रीढ़ भी बनेगी। तो एनर्जी को लेकर जो अनाउंसमेंट हुए हैं और एक तरह से हम अगर देखें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी सिक्योरिटी को ग्रोथ स्ट्रैटेजी से सीधे सीधे जोड़ा गया है, तो कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया कि एनर्जी हमारी ज़रूरत है और हम लोग लगभग 80% एनर्जी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने अपना एक रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो बनाया है और आज के समय में करीब 50% हम लोग अपनी ज़रूरतें रिन्यूएबल एनर्जी खासकर नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त कर रहे हैं। इसमें हमें क्लीन टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जो है आत्मनिर्भरता बनानी है। इसके अंदर में इस बजट में सबसे पहले बीसीडी एग्जम्पशन किया गया है, जिसमें हमारे पास सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का 100 गीगावाट 2030 तक का जो है आयाम आने वाला है। तो उसमें उस पर एक कंपोनेंट है जो कि सोलर सेल के लिए जो सोलर ग्लास बनाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर बीसीडीजी का एग्जम्पशन दिया गया। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बैटरी जो है, लिथियम आयन बैटरी, वो जो है बहुत ज़रूरी हमारे लिए है, क्योंकि हमें एनर्जी स्टोरेज, जिसमें हम लोग बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को हम कंज्यूम करना चाहते हैं ग्रिड मॉडर्नाइजेशन में, तो उसके लिए 260 गीगावाट के आवर के ऊपर की बैटरी की ज़रूरत है। उसमें लिथियम आयन अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो कैपिटल गुड्स हमें लाने हैं, तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, उसमें एग्जम्पशन दिया गया है। इसके बाद क्रिटिकल मिनरल
हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए, और उसकी प्रोसेसिंग में टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा योगदान है, और अभी भारत उसमें शुरुआत कर रहा है, तो उसके कैपिटल गुड को हमें जो है एग्जाम किया गया है OECD से। जो अंतिम पॉइंट इसमें है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, जिसमें हम लोग अपने जो कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम 2070 तक नेट जीरो होंगे, तो हार्ड टू अबेट सेक्टर में जो प्रोसेस एमिशन है उसको कम करने के लिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन में 20,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा और बहुत सार्थक पहल की गई है। इसके माध्यम से जो हार्ड टू अबेट सेक्टर है, खासकर पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज एंड केमिकल्स, इसमें जो इनके प्रोसेस एमिशन है उसको उस पे जो है काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। इसमें R&D पायलट प्रोजेक्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट भी आएंगे। तो ये बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के लिए और इसको एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सारी इसमें अनाउंसमेंट है। बिल्कुल, तो एनर्जी को लेकर जो भी बातें हैं वो आपने साझा की हैं। अब संजय जी, अगर GST और कस्टम के हिसाब से हम बजट को देखें और आपकी इसमें एक्सपर्टीज है, तो GST रेट्स में कोई बड़ा शॉक नहीं है, बल्कि सिंप्लीफिकेशन की बात है, स्टेबिलिटी की बात है, ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस का रोड मैप कहीं ना कहीं सामने आया है। तो इसे आप क्या मान रहे हैं, ये बड़ा पॉलिसी सिग्नल है एक बार फिर से? GST में कुछ एक्ट के प्रावधानों में उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। उन्होंने सेक्शन 15 या दूसरे कुछ प्रावधान उसमें हल्का हल्का चेंज किया है तो स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो उन्होंने किया है। और बाकी जो GST में जो चेंजेस थे वो लास्ट ईयर अक्टूबर में ही कर दिया, सरकार ने कर दिया था, जब रेट रैशनलाइजेशन उन्होंने किया था कि 4 स्लैब की जगह 2 स्लैब वो ले आए थे। अब हमारे पास सिर्फ 5% और 18% इसके 2 मेनली स्लैब्स हैं। कुछ छोटे मोटे और स्लैब्स हैं जैसे प्रेसियस स्टोन्स या सब या गोल्ड वगैरह, वो छोटे मोटे स्लैब्स हैं इस तरीके के। तो मेनली GST का इन्होंने ये किया है, और ऐसा एक्ट में कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया जो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया है। जहाँ तक कस्टम्स का सवाल है, जैसा कि अभी उपाध्याय जी ने बताया कि कस्टम्स में उन्होंने कई आइटम्स पे ड्यूटी रिड्यूस की है और कुछ आइटम्स पे ड्यूटी उन्होंने इंक्रीज भी किया है। रिडक्शन में जैसे इन्होंने कहा कि लिथियम माइनर आयरन बैटरी के लिए, उसके लिए कैपिटल गुड्स के लिए किया, और कुछ और आइटम्स में भी किया, जैसे कुछ इंपोर्ट्स पर किया है इन्होंने। मैरीन जो एक्सपोर्ट्स है, लेदर और मैरीन एक्सपोर्ट्स है, उसको बढ़ावा देने के लिए उसके जो कुछ आइटम्स जो आएंगे बनाने के लिए उसमें कम किया है, कस्टम ड्यूटी में कम किया है, और बैटरी स्टोरेज वाले पर किया है। इस तरह से कई आइटम्स पे इन्होंने ड्यूटी को घटाया है इन्होंने। तो ये चेंजेस है कस्टम्स में। और दूसरे कुछ जो और भी कुछ चेंजेस कस्टम्स में किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक सिस्टम होता है हमारा AEO का सिस्टम होता है। AEO होता है टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो टायर 2 एंड टायर 3 को इन्होंने और थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। जैसे उनको ड्यूटी डिफरमेंट था टायर 2 एंड 3 वाले को कि 15 दिन का ड्यूटी डिफरमेंट था, उसको उन्होंने 30 दिन कर दिया इन लोगों ने। उसी हिसाब से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के हिसाब से जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, तो SEZ यूनिट जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाले यूनिट्स हैं, उसमें उनको कुछ DTA सेल जो है जो कर सकते हैं कि लिमिटेड अमाउंट अपना DTA सेल कर सकते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। ऐसे तो उनको पूरा एक्सपोर्ट करना पड़ता है, बट लिमिटेड अलाउज है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। उसमें भी सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है, जैसा कि हम बजट में हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल अलग अलग क्योंकि सेक्टर्स हैं। और टीपू हमारे साथ शैलेश पाठक जी बहुत देर से बने हुए हैं। शैलेश जी सीनियर एडवाइजर पॉलिसी MSA इंडिया। शैलेश जी, अगर हम देखें तो MSME का बहुत बड़ा रोल है अगर हम पूरी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की बात करें। और इस बजट में हम देखें तो सरकार ने जो MSME क्रेडिट एक्सेस है, डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम की बात करें, और फॉर्मलाइजेशन को ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के बड़े पिलर्स के रूप में देखा गया है। तो ऐसे में जब खास तौर से हम गारंटी बेस्ड क्रेडिट सपोर्ट और फिनटेक लेड लेंडिंग को लेकर जो पुश दिखाई दे रहा है, ये कितने बड़ा स्टेप माना जाए? क्योंकि एक तरह से देखें पहली बार MSME की जो सबसे बड़ी समस्या रही है उसे एड्रेस करने की कोशिश क्या इस बार बजट में की गई है? MSME का उत्तर देने के पहले मैं अपने जो 2 विशेष सेक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों के बारे में बात कर लूं, क्योंकि हर MSME तभी तरक्की करेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और शहर अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ही देखें तो 11 साल में 6 गुना उस पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है 2 लाख करोड़ से बढ़ के 12 लाख का 12.2 लाख करोड़, और इसका परिणाम दिख रहा है हमें। जो MSME तिरुपुर से, तमिलनाडु से लुधियाना करीब 9 दिन में ट्रक चलता था, वो अब 3 दिन में पहुंच जाता है।
जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत है। इसी श्रृंखला में जो हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से अभी दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता ज्वाइन कर रहे थे, कोलकाता, अब वो सीधे डांकुनी से सूरत ज्वाइन कर रहे हैं, यानी मध्य भारत, नागपुर से होते हुए उधर जमशेदपुर, इधर सोलापुर होते हुए ये बीच में कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से 7 हाई स्पीड रेल अभी पहली जो हो रही है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, उसके बाद अब 7 और हो रहे हैं, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, और मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई आदि। दूसरा जो शहरों के बारे में है, आज के दिन हिंदुस्तान में 70 ऐसे शहर हैं जो 5 लाख की आबादी से ज्यादा है। इन 70 में 10 को निकाल भी दिया जो सबसे बड़े हैं, 60 शहरों में ही केंद्रित होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग। तो कुल मिला के एमएसएमई की, जैसा आपने कहा, क्रेडिट नीड्स को पिछले 10 सालों में काफी कुछ हुआ है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीज के ऊपर एम्फेसिस है वो देखकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और जिस तरह से बात की है सुभाष जी, सुभाष जी, जिस तरीके से चर्चा बजट पर चल रही है, आपने देखा कि तमाम सेक्टरों पर हम बात कर रहे हैं। खासतौर पर मैं अगर एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करूं तो इस बार बजट में इसको घटाया गया है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया है 150% इसके अंदर बढ़ा है फ्यूचर के अंदर, और 50% ऑप्शंस में बढ़ा है। तो ये इमीडिएटली तो ये मार्केट आज नीचे आया है, लेकिन लॉन्ग टर्म फिस्कल डेफिसिट वो हमारा डिसिप्लिन्ड है। 26-27 का जो टारगेट है वो 4.3% पे लाने का है, और इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.4% पे है। तो इससे कॉन्फिडेंस, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्च हुआ है 12,20,000 करोड़ है नी, ये भी एनकरेजिंग है इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो इससे भी इन्वेस्टर का, बाहर के इन्वेस्टर का भी और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कैपिटल मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत पुश करता है, क्योंकि यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो टोटल इकोनॉमी बेटर हो जाती है, 4 टाइम ग्रो करती है, और कंजम्पशन बेस्ट होता है, डिमांड बढ़ती है, और अगेन रेवेन्यू बढ़ता है, जीएसटी बढ़ता है। एक चक्का जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी का, वो चक्का चल जाता है। तो ये बड़ा पॉजिटिव है। और ये एसटीडी जो बढ़ी है, इससे थोड़ी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, और इससे इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, लिक्विडिटी में थोड़ा फर्क रहेगा। तो मैं समझता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको थोड़ा सा फेवरेबली भी देख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट की डिमांड तो एसटीटी घटाने की थी, उल्टा वो बढ़ गई है। तो वो थोड़ा इसको उस एक्सटेंट तक हम थोड़ा। संजय सर, आप की राय लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कस्टम्स में, सीजीएसटी में कमिश्नर रहे हैं और बहुत ही पैनी निगाह आपकी रही है तमाम जो ये चीज़ें रही हैं। ओवरऑल अगर मैं कस्टम के लिहाज से या सीजीएसटी के लिहाज से मैं आपसे बात करूं, तो आपके नज़रिए से ये बजट कैसा है पिछले साल की तुलना में? ये बजट बहुत अच्छा है। हमारा जो ये, मैं जो स्ट्रेस देख रहा हूँ यहाँ पर, जो फाइनेंस मिनिस्टर का या सरकार का जो स्ट्रेस देख रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ है। कई जगह उन्होंने बोला कि हम ग्लोबल हब बनेंगे फॉर कंट्री के लिए। तो दूसरा, उन्होंने कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, या आपका ये कंटेनर जो है, कंटेनर की बहुत सी से कंटेनराइज कार्गो बहुत ज़्यादा जाता है, तो कंटेनर्स हम नहीं बनाते थे, कंटेनर बनाने का है। कंटेनर को रिपेयर का भी है, इन्होंने किया इन्होंने। तो और बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे एमएसएमई को बहुत एलोकेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अभी जो स्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है, वो स्ट्रेस मुझे जो अपने पर्सनली दिखाई पड़ रहा है जी, कि हम, और सेमी कंडक्टर पे है, रेयर अर्थ्स पे है, कि ग्लोबल सिचुएशन में हम कैसे compete करें अपना। तो थोड़ा उसका जो आयाम है, तो नुआंस है, वो बदल गया है, जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे अब आप देखिए पीछे जो वेनेजुएला में जो भी हुआ, हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना पाएंगे। वहाँ जो कुछ भी था वो टेक्नोलॉजी के चलते था, मोस्टली उन्होंने टेक्नोलॉजी से किया। और टेक्नोलॉजी को तो हम उसी से ला सकते हैं, एआई से ला सकते हैं, या आप सेमी कंडक्टर से ला सकते हैं, या जो भी ऐसी चीज़ें उसे ला सकते हैं।
उस पर गवर्नमेंट ने इस बार काफ़ी, और क्रिटिकल मिनरल्स पे भी काफ़ी उन्होंने जोर दिया है। तो थोड़ा मैंने एकदम ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गया है, ठीक है, और बेटर, मैं कहूँगा बेटर ओरिएंटेशन हो गया है। बिल्कुल जी। और एक हम इस समय विनीत मल्होत्रा जी का रुख करेंगे, जो कि डायरेक्टर फाउंडर हैं वीएनए हॉस्पिटल के। विनीत जी, स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा आप बताइए, क्योंकि अच्छा खासा फोकस हम स्वास्थ्य पर देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिर्फ खर्च बढ़ाना ही नहीं, जो इकोसिस्टम है हेल्थ को लेकर उसे इंप्रूव करने की कोशिश की गई है, उसकी दिशा में बड़ी तैयारी दिख रही है। जब हम बायोफार्मा शक्ति की बात कर रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें होना है, कितना कुछ बदलेगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो मेंटल हेल्थ को लेकर इंस्टीट्यूट की स्थापना की बात है, आयुष केंद्रों की स्थापना की बात है, तो हेल्थ के नजरिए से कितना अहम इस बार का बजट? काफी अहम है, बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले वर्ष के हिसाब से काफी इस पे गौर किया गया है, एंड यहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है, बढ़ाया गया है। और यदि हम देखें तो इस प्रकार की जो पर्टिकुलरली अगर हम देखें आईसीटी ट्रायल सेंटर्स केंद्रों को 1,000 से अधिक केंद्रों का स्थापना करना, बायोफार्मा के ऊपर इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव व्यू है। 5 मेडिकल टूरिज्म हब्स इनने डिक्लेयर किए हैं, जो कि क्रिएट किए जाएंगे ताकि हम बाहर के अंतर्राष्ट्रीय पेशेंट्स की भी सहायता उस एक सिस्टमैटिक तरीके से कर सकेंगे। ये सारे के सारे जितने प्रावधान है मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। हम थोड़ा सा और चाहते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो स्मॉलर प्राइवेट नेटवर्क है। हम जानते हैं हम देश में 80% स्मॉलर प्राइवेट नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जो कि कर रहे हैं। प्रॉबेबली हम इसको और डिटेल में देखेंगे तो समझेंगे कि क्या असर उस पर भी आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो भी देखना चाहते हैं कि इसका असर स्मॉलर प्राइवेट नेटवर्क हॉस्पिटल्स पे कैसा है। बिल्कुल। और मैंने जैसा कहा आपसे कि पूरे इकोसिस्टम को लेकर विनीत जी, मैंने कहा इकोसिस्टम चेंज करने की बात है हेल्थ को लेकर, क्योंकि जब लास्ट माइल डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो हेल्थ सिस्टम में भी कहीं ना कहीं जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, एडवांसमेंट जितना भी हेल्थ सेक्टर में हो रहा है, वो आम आदमी तक जल्द से जल्द पहुंचे। इसे लेकर जो ट्रायल्स को लेकर बात है, उसमें तेजी लाने की बात है, और उसका जो नतीजे हैं वो भी जल्द से जल्द पहुंचे। इससे जो हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो हैं ही, कहीं ना कहीं जब हम वैक्सीन्स की बात करते हैं, जिस तरह से उसे लेकर भरोसा दुनिया ने हम पर जताया, तो जब हम ट्रायल्स को और तेजी से करने की बात है, उसके रिजल्ट्स को जल्द से जल्द सामने लाकर आम आदमी तक पहुंचाने की बात हो रही है, उस दिशा में ये बजट कैसा है, अगर संक्षेप में आप बताएं। बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर जैसे अभी संजय जी ने बात करी कि हमें कंपेयर करना है कि ग्लोबल एफर्ट में हम किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम मेडिकल इंडस्ट्री की बात करें तो अगर अमेरिका के बाद अब हम बात करें तो सारा रिसर्च चाइना से आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं अगर हमें compete करना है तो वी हैव टू बिकम उसी तरीके का एक रिसर्च, हमें बैकग्राउंड बनाना है, एक बेस बनाना है, यदि हमें उनके साथ compete करना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे है और चाहे वो रिसर्च ट्रायल्स या फार्मास्यूटिकल के बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं ये जो हम 1000 क्लिनिकल ट्रायल्स सेंटर्स की स्थापना कर रहे हैं, ये एक बहुत अहम स्टेप है जहां पर हम लोग अपने रिसर्च बेस को स्ट्रांग कर सकते हैं और यहाँ से हम एक इकोसिस्टम बना सकते हैं जो कि इन सारी चीज़ों के लिए फिर बहुत यूजफुल होगा। बिल्कुल। चले जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो जाहिर तौर पर जो एमएसएमईज हैं उनको भी सीधा सीधा फायदा इसका मिलेगा। एक तरह से देखें तो एमएसएमईज को अब मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और जॉब क्रिएशन की बैकबोन बताया गया है। हम जानते हैं कि इसके जरिए जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कितना बड़ा रोल एमएसएमईज का रहा है। क्या एक तरह से देखिए कंप्लायंस जो सिंप्लीफिकेशन है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने पर जो जोर दिया गया है, तो पॉलिसी लेवल पर इसे आप कैसे देख रहे हैं? बजट एमएसएमईज को अब प्रोटेक्शन सीकिंग सेक्टर से निकालकर कहीं ना कहीं क्या ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ग्रोथ पार्टनर के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश है इस बजट के जरिए? आपने बहुत सही फरमाया। प्रोटेक्शन से अच्छा उनको ग्लोबली कंपेटिटिव बनाएं, और एमएसएमईज को ज्यादातर 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो फाइनेंस, जो क्रेडिट टाइमली मिल जाए, दूसरा इनपुट एक्सेस, जो उनके कच्चा माल है वो आसानी से मिल जाए, और तीसरा मार्केट्स यानी लॉजिस्टिक्स और जल्दी से बायर ढूंढने की। तीनों चीजों पे इस सरकार ने पिछले 10-11 साल में अच्छा काम किया है। क्रेडिट में तो सचमुच पहले से ज्यादा उपलब्धता है। जीएसटी के कारण एमएसएमईज को सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि बड़ी कंपनियां तो क्रेडिट आराम से ले जाती थी। आज के दिन जीएसटी के कारण
क्रेडिट हिस्ट्री एक एमएसएमईज की बन रही है, और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस में जो एमएसएमई एक्सपोर्ट्स के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, न केवल इस बजट में बल्कि पिछले 5-10 साल में, वो काबिले तारीफ है। एक और चीज यहां मैं जोड़ना चाहूंगा, बड़ी कंपनियों के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी बिना एमएसएमईज के टिक नहीं सकती। तो चाहे वो टाटा ग्रुप हो या कोई भी बड़ा सा ग्रुप हो, उसके कम से कम 10-20 हजार एमएसएमईज होंगे जो उनके सप्लाई चेन में आते हैं, और सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को सुधारने का बीड़ा जो उठाया गया है, उससे एमएसएमईज को बहुत ज्यादा फायदा है। बिल्कुल, और इसी के साथ शैलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इनसाइट्स आपने दी हैं बजट को लेकर, जो बारीकियां आपने खासतौर से एमएसएमई को लेकर समझाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीएस पन्नू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट। जीएस पन्नू जी, थोड़ा सा हमें बताइए, जब आम आदमी देख रहा है तो वो कह रहा है कि टैक्स को लेकर कोई राहत नहीं दी गई है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली इसके असर को समझा जाए तो आम आदमी को ही इससे फायदा होना है। बहुत सिंप्लीफाई करके अगर टैक्स के नजरिए से आप इस बजट की बारीकियां हमें समझाएं। यस, ऑस्टेंसिबली आपकी बात ठीक है। फर्स्ट परसेप्शन यही है कि भाई इसमें कोई डायरेक्ट टैक्सेस के रेट पे, इंडिविजुअल पे या नॉन इंडिविजुअल्स के टैक्स रेट्स पे कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई स्लैब्स बदली नहीं गई है, एग्जम्पशंस बढ़ाई नहीं गई है, तो वो बात ठीक है। लेकिन जो फोकस्ड एक प्रयास किया गया है टू सिंप्लीफाई द प्रोसेसेस, टू रेक्टिफाई एंड रैशनलाइज अ फ्यू प्रोविजंस, उसकी मैं आपको उल्लेख करता हूँ। फॉर इंस्टेंस, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल से जो इनकम्स आती थी उस पर एग्जाम्प्ट किया गया है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी है और अदरवाइज ऑल्सो। अदर थिंग इज दैट जो कई बारी इंसान अपने रिटर्न प्रॉपरली नहीं भर पा रहे हैं, तो रिवाइज रिटर्न करने का समय बढ़ाया गया है। इट्स ए वेलकम मेजर। सेकेंडली, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया है कि अगर रीअसेसमेंट के लिए आपकी रिटर्न पिकअप कर ली गई है, रीअसेसमेंट प्रोसेस में अगर आप खुद से आगे बढ़ के अपनी रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे करके वो भी कर सकते हैं, जो कि बहुत पहली बार किया गया है। सेकेंडली, और एक दूसरा ये है कि जहां रेट थोड़ा सा कम हुआ है, वो एक ये प्रावधान है, अभी जो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है उस प्रोविजन को थोड़ा रैशनलाइज किया गया है। वो प्रोविजन अब फाइनल हो जाएगी, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसका रेट जो है 15% से 14% तक भी किया गया है। दूसरा, जो जैसे कि फोकस रहा, बाकी स्पीकर्स ने भी कहा कि हमारा आईटी सेक्टर और जो डेटा सेंटर्स हैं, हमारे फॉरवर्ड लुकिंग, यही फॉरवर्ड गोइंग हमारे सनराइज इंडस्ट्रीज होंगी, सनराइज एक्टिविटीज होंगी, इन दोनों में टैक्स हॉलिडेज का प्लान किया गया है। फाइन ट्यूनिंग देखनी है कितना होगा। आईटी सेक्टर में जो जिसमें सॉफ्टवेयर की कंपनीज बहुत आती हैं, उसमें सेफ हार्बर रूल्स, सेफ हार्बर मार्जिन, जिसके अंदर विजिबिलिटी उनको टैक्सेशन में उनको सुविधा होगी असेसमेंट कराने में, वो मार्जिन बढ़ाए गए हैं। प्लस उनका दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। जो अभी कंपनीज सिर्फ 300 करोड़ तक की कंपनीज आ सकती है, वो 2000 करोड़ तक की कंपनीज भी उसमें उसका बेनिफिट ले सकती हैं। तो दिस इज ग्रेट बेनिफिट इन द सेंस कि लिटिगेशन कम होगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आसान होगा डिपार्टमेंट से, प्रोसिक्यूशन की कुछ प्रावधान है जो डिक्रिमिनलाइज की गई है, और ये अप्रोच बिल्कुल कंसिस्टेंट है गवर्नमेंट की दूसरी अप्रोच के साथ, जहां ज्यादा क्रिमिनल लॉज में जो एक्टिविटीज हैं जिनको डिक्रिमिनलाइज किया जा सकता है, उसकी तरफ ये डायरेक्शन है। और यहाँ पर भी वो चीज की गई है टीडीएस के माध्यम, टीडीएस के कुछ प्रोविजन से। कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, पीएलआई स्कीम भी उसके अंदर थी, तो वो उसको फर्दर एक बेनिफिट जो बहुत बड़ा दिया गया है फॉरेन कंपनीज के लिए। कुछ फॉरेन एक्सपर्टाइज है जहां पर कैपिटल का और इंडस्ट्री का, मशीनरी का, वो अगर मशीनरीज अपनी सप्लाई करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में, तो उस चीज पे उनको कोई टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दिस इज बीन प्रोवाइडेड फॉर अबाउट 31 असेसमेंट ईयर तक, मतलब 5 साल का उसमें प्रावधान किया गया है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कि इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाएगा फिस्कल मेजर से। अगेन, जैसे रेयर अर्थ और मैग्नेट्स की और क्रिटिकल मिनरल्स की बात किया गया था, उसमें भी एडिशनल एग्जम्पशन दी गई है फॉर 10 ईयर्स के करने के लिए। ऐसे कई प्रावधान हैं जो छोटे छोटे हैं, फाइन ट्यूनिंग है। प्लस स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छा बेनिफिट ये है, जब से ब्लैक मनी एक्ट आया था 2015 से, तो उस वक्त कुछ समय के लिए ऐसे टैक्स पेयर को जिनसे गलती से फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं थी, वो 3 महीने की विंडो दी गई थी।
लेकिन अब उस विंडो को अपने बढ़ा के 6 महीने किया है अभी स्पेशली, बट ऑफ कोर्स ओनली स्मॉल टैक्स पेयर्स where the income or the asset value is not more than 5 crores or asset value is income is 1 crore asset value, जहां income भी नहीं दी गई है. तो it operates on two different fields, जहां सिर्फ income नहीं डिक्लेयर की गई, जहां सिर्फ एसेट ने डिक्लेयर किया, इनकम पे टैक्स दे दिया गया, जहां और दूसरा जहां इनकम और एसेट दोनों चीजें ही नहीं डिस्क्लोज थी. बिल्कुल. व्हाट आई एम सेइंग इज टीसीएस कुछ जैसे लिबरलाइज स्कीम के अंदर जो फॉरेन रिमिटेंस स्कीम है, एजुकेशन का था, एजुकेशन पे टीसीएस काटना पड़ता था, वो 2% कम किया गया है. अगेन ओवरसीज टूर पैकेजेस, जहां से फैमिलीज को अगर हॉलिडेज के लिए बाहर जाना है तो you used to pay TCS of 5%, so now it is reduced to 2%. Limits बढ़ा दी गई हैं. So all these things are positives. Yes, कुछ fine tuning देखनी पड़ेगी. There are some areas जहां litigation pending थी 4-5 sectors में, उसको retrospective amendments भी की गई हैं to take care of those amendments. I think, I'm sure those are fine tunings. It could have been better कि उनको भी अच्छे से उनको भी dispute ना आगे बढ़ता, हो सकता है उसमें dispute आगे चले. But these are broadly, सबसे बड़ी बात यह है, this is the year of transition. जो नया इनकम टैक्स एक्ट है 2025, बिल्कुल, वो फर्स्ट बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि ट्रांजिशन का फेज है और टैक्स रिफॉर्म्स को भी एक बड़े रिफॉर्म्स में माना जा रहा है हमारे देश के अंदर. यस मनु जी, आखिरी सवाल आपसे मैं यही है, टैक्स कंप्लायंस को लेकर समझना चाहूंगी, क्योंकि इस बजट में देखें तो सरकार ने जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज, फेसलेस प्रोसेस और फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाने की बात कही है, ताकि जो टैक्स पेयर का कंप्लायंस बर्डन है वो कम हो सके. तो क्या बजट भारत में टैक्स कंप्लायंस को डर आधारित व्यवस्था से निकालकर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आधारित और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम में बदलने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, एक बड़ा रिफॉर्म है? Yes, I would say not only confidence but trust building also. For instance, जैसे फेसलेस असेसमेंट्स में अब रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं एट द असेसमेंट स्टेज. अब 2-3 प्रोविजंस ऐसी हैं जो विचार प्रोसीजरल प्रोविजंस, जिससे लेकिन फिर भी टैक्स पेयर को इंटरफेस होता था इनकम डिपार्टमेंट से. आई गिव यू वन एग्जांपल जिसमें चेंज किया गया है. अगर किसी को अपने इनकम रिसीव करनी है एट ए लोअर रेट ऑफ टैक्स, लोअर रेट ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो उसको अप्रोच करना पड़ता है असेसिंग ऑफिसर को टू सीक एग्जाम्पशन और ए सर्टिफिकेट व्हिच इज कॉल्ड इन द लीगल टर्म्स. अब ये चीज उसको इंटरफेस खत्म करके वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म से, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म से वो चीज ये कर पाएंगे. और भी ऐसे प्रावधान 2-3 स्टार्ट किए हैं. दिस इज a very welcome measure where taxpayers का ease of doing work with the department is simplified, and there is a certainty involved there, because आप कई बार uncertainty हो जाती है when people go physically and meet the department, but once it is there in automation mode, there is bound to be a better compliance qualitatively and also speedily. तो ये is definitely a direction उसकी correct है. But yes, taxpayers will always have their own perception of things when it comes to implementing and adopting the tax laws. We will go forward and look at that. But certainly, yes, it's the right direction oriented. बहुत बहुत शुक्रिया यस मनु जी. टीपू, दीपक उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले संसद टीवी में. दीपक जी, जैसा आप जानते हैं कि कर्तव्य भवन का ये पहला अपना आम बजट है जो वहाँ पर तैयार किया गया. जिस तरीके से देश लगातार 2047 तक एक जो टारगेट है, विकसित भारत का लक्ष्य है, उसकी तरफ लगातार बढ़ रहा है. ओवरऑल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ बतौर जर्नलिस्ट कि आप इस पूरे बजट को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जो बजट है ये अपने आप में बहुत अलग बजट है. इसे आम बजटों की तरह नहीं है कि आम आदमी को क्या मिला, इस सेक्शन को क्या दिया, उस सेक्शन को क्या दिया. ये जो बजट है ये 1947 के बाद ऐसे समय में बजट हो रहा है जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है. मतलब आप एक तरफ अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन के बीच में दरारें आ गई हैं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रिसोर्सेज जो हैं उनको लेकर पूरी दुनिया में मारामारी चल रही है कि कौन कितने रिसोर्सेज पर कब्जा जमा सकता है. भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, रशिया से ऑयल खरीदने की मनाही हो रही है, ईरान में अलग कुछ चल रहा है. ऐसे मौके पर जब हमको ये मालूम है कि हमको
सेल्फ रिलायंस मतलब मैन्युफैक्चरिंग में एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हम और इस तरह से काम करना है कि हम आने वाले 1947 तक एक डेवलप नेशन बन जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा करना है कि हम उस समय पूरी दुनिया के सामने सीना तान कर खड़े हों। ऐसे समय में ये ऐसा बजट है जिसमें आम आदमियों को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है और जो लोग इस अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं या आम लोगों के जो पैसे को चोरी करते हैं उन लोगों पर डंडा भी मारा गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बाय बैक जो करते थे कंपनियों से, जो शेयर बाय बैक था उसके ऊपर टैक्स 22% कर दिया गया। ये ऐसा मामला था कि 100 रुपए का शेयर बेचा और बाद में अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचाकर उस शेयर को 10 रुपए कर दिया और फिर बाय बैक कर लिया। ऐसे लोगों को सरकार ने चिन्हित किया है। तो दूसरी तरफ जो आम लोग जो गांव देहात में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे सबसे ज्यादा भैंस, बकरी, गायें, इनके ऊपर फोकस रहता है। ये उनकी जीविका का बड़ा साधन है। इस बजट में वेटनरी के ऊपर फोकस किया गया है, आपकी मछलियों के ऊपर। कोस्टल एरिया इतनी बड़ी पशु डॉक्टर्स बताने की बात की गई है, पशु डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा वही मैं बोल रहा हूँ कि इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इनकी इनकम कैसे बढ़ेगी। अब जो काजू उगाने वाला किसान है उसको किसी ने नहीं देखा। $2 बिलियन से ज्यादा का हम काजू का एक्सपोर्ट करते हैं, इसको हम 10 बिलियन तक लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या आज तक किसी सरकार ने इन काजू उत्पादकों को देखा? जो हम मछली पकड़ के फिशरीज में, दुनिया में इतना बड़ा व्यापार है फिशरीज का, इतना बड़ा व्यापार है जो समुद्र से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब इस सरकार ने समुद्र मंथन स्कीम लेकर आई है जिसमें ना सिर्फ हम एनर्जी को हम ढूंढेंगे, साथ ही साथ जितने भी इस कोस्टल एरिया से लगे हुए जो आर्थिक चीजें हैं उन पर ध्यान देंगे। कोकोनट पर ध्यान दिया इस सरकार ने। कोकोनट पर कितनी सरकारों ने ध्यान दिया? 3 करोड़ जो लोग हैं, किसान हैं, उनसे जुड़े हुए जो कंपनियां हैं, छोटे छोटे प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, 3 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। किसने ध्यान दिया था? इस सरकार ने ध्यान दिया है उसके ऊपर कि हमको उनको फोकस करना है। तो इसमें सब कुछ है। जहां आर्थिक तौर पर आप रेयर अर्थ कॉरिडोर बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम लोगों से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं जिनके जरिए से हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर फोकस किया गया है। कोकोनट, वेटनरी, ये सब करके। साथ ही साथ एक बड़ा सेक्टर जो है जो बायो से रिलेटेड है, बायो फार्मा से रिलेटेड है, उसको 10,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम दी है। और हम दुनिया के नंबर 1 जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं, दुनिया का हब कहे जाते हैं, इस सेक्टर को आगे बढ़ाना है। तो इस बजट में आर्थिक तौर पर देश को मजबूत करने के तौर पर सब कुछ है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि इस सेक्शन को क्या मिला। मतलब जो संकीर्ण दृष्टि होती है किसी भी बजट को देखने की कि आपने क्या दिया, वो इसमें नहीं है। लेकिन पूरे देश को देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें। दीपक जी, इसमें खास चीज देखी गई कि माइनिंग को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और माइनिंग कॉरिडोर का भी जिक्र किया गया है। झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, या जो और भी राज्य हैं, तो आंध्र प्रदेश है। तो उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि इस घोषणा के बाद में इससे जो जुड़ी चीजें हैं उनमें क्या फायदे होंगे? देखिए, एक तो बड़ा जो कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, जो माइनिंग इक्विपमेंट है, रेयर अर्थ इक्विपमेंट जो आते हैं, जिनकी अगर वो इक्विपमेंट आएंगे तो हम ज़्यादा माइनिंग कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। और जो प्रोसेसिंग जो प्लांट्स लगने हैं बहुत सारे हमारे पास, हम माइन तो कर पाते हैं, मतलब हमारे पास आयरन ओर है, बॉक्साइट है, लेकिन उसको प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट बनना है उसमें हमको प्रॉब्लम है। और हम बहुत बार ऐसे हमारा जो आयरन ओर या बॉक्साइट या और दूसरे प्रोडक्ट खरीद के जापान उनसे ही प्रोडक्ट बनाकर हमको बहुत महंगे दामों पर दे बेचता है। इस सरकार की दृष्टि ये है कि हम सिर्फ आयरन और बॉक्साइट के माइनिंग कंट्री ना बने, हम उनके रियल जो प्रोडक्ट जो बनते हैं, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है या जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो बनाएं। इसीलिए सरकार ने जो इक्विपमेंट के ऊपर कस्टम ड्यूटी है उसको कम की है। अगर हम आज मान लीजिए एल्युमिनियम हमारी कंट्री में बॉक्साइट बहुत पाया जाता है, लेकिन एल्युमिनियम को प्रोसेस करके एल्युमिनियम बनाने के प्लांट कम है या हम अपनी पूरी कैपेसिटी से उसको यूज नहीं कर पाते। तो अब एल्युमिनियम की जो चाहे कुछ प्लांट्स जो है अपने को एक्सपेंशन कर रहे हैं, उनको अब बॉक्साइट मिलेगा, साथ ही साथ इक्विपमेंट, क्योंकि प्लांट बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, टाइम लगता है उसमें, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है उनको लेके आना पड़ता है। ये कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगी तो प्लांट जल्दी बनेंगे,
तो हम अपना जो रॉ मटेरियल है उसको इस्तेमाल करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में बना पाएंगे और फिर उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। हम एज अ इकोनॉमी, एज अ इंडस्ट्री, एज अ सेक्टर उनको मजबूत करने की कोशिश इस बजट में कर रहे हैं। और ये जो कॉरिडोर बनेंगे इनके जरिए से हम जो चाइना के ऊपर हमारी 90% की डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ के ऊपर, उसको भी कम कर पाएंगे। तो ये एक बहुत मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं कि ये बहुत चालाक सरकार है। चालाक इसलिए है क्योंकि ये हर सेक्टर पर बहुत पैनी दृष्टि रख के उसके ऊपर सही कदम उठाने की कोशिश करती है। अब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही देख लीजिए, 2014 में 2 लाख करोड़ था, आज 12 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो आने वाले 10 साल 15 सालों में इस एक्सपेंडिचर का लाभ पूरी कंट्री को, पूरी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये इस बजट में है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। विनीत मल्होत्रा जी, जैसे आपने बताया स्वास्थ्य बजट को लेकर जो तमाम ऐलान हैं, अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अभी भी जब हम स्किलिंग की बात कर रहे हैं वो हर सेक्टर की बात है और हेल्थ सेक्टर में भी जो अपस्किलिंग है उसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि जितने ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं और जिस तरह से अब स्वास्थ्य के सेक्टर में लगातार मांग बढ़ रही है हेल्थ प्रोफेशनल्स को लेकर, ट्रेन प्रोफेशनल्स को लेकर, यहाँ स्किलिंग को हम कैसे देखें। और जैसे मैंने जिक्र किया था कि मेंटल हेल्थ पर अब लगातार फोकस है, 2 नए सेंटर का खुलना, यह अपने आप में कितना बड़ा कदम माना जाए बजट के अंदर? बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया में मेंटल हेल्थ सेंटर नहीं था। निम्हांस हैदराबाद में सब जानते हैं एक काफ़ी प्रसिद्ध सेंटर है, एंड अब नॉर्थ इंडिया में इन्होंने 2 सेंटर्स अनाउंस किए। आई थिंक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड ये इस पूरे रीजन की पॉपुलेशन की बहुत सहायता करेगा और बहुत हेल्पफुल होगा। इसी तरह इनने बहुत एक और प्रावधान दे हैव अनाउंस, एक चीज़ और अनाउंस की है जो इनने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग के लिए फॉर अलाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि जहां पर ये जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में बेसिक लेवल से काम करते हैं उन लोगों की ट्रेनिंग और उसके लिए बहुत प्रोविजन किया है इस करंट बजट में, जो कि मेरे ख्याल से हम जहां पर बात करते हैं कि हमें इसको पूरे देश में अगर स्थापित करना है, हमें रूरल नेटवर्क, यानी कि हमें अगर गांव के अंदर भी Tier 2 Tier 3 टाउन्स में भी और छोटे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में अगर हम देख रहे हैं कि जहां पर हमें मुमकिन है कि उस किस्म के सर्विसेज इतनी इजीली प्राप्त नहीं है, तो वहाँ पर क्योंकि अब ये इस बजट के ज़रिए इनने इसके लिए एलोकेशन की है और वहाँ पर अब ये हेल्थ केयर ट्रेनिंग ये वाले प्रोफेशनल्स को, जो अलाइड हेल्थ केयर के ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी फ़र्क करेगा, क्योंकि इन सारे अस्पतालों में, छोटी जगहों में या दूर दराज के इलाकों में ट्रेंड हेल्थ केयर स्टाफ अवेलेबल होगा। और फिलहाल इस समय हम सीधा आपको लिए चलेंगे पंजाब में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब का दौरा कर रहे हैं और संत गुरु रविदास जी की 649वीं जन्म जयंती के अवसर पर